की बैठक होने वाली है। कैबिनेट से भी अनुमति लेनी पड़ती है और ये अनुमति लेने के पश्चात 11 बजे वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण अपना 5वां बजट पेश करने वाली हैं और ये मोदी 2.0 सरकार का ये अंतिम पूर्णकालिक बजट होने वाला है। जी हाँ, लगातार हम अपडेट देते जा रहे हैं और अपडेट ये है कि वित्त मंत्री संसद भवन परिसर पहुंच गई हैं। कैबिनेट की बैठक शुरू हो रही है और कैबिनेट की बैठक में अनुमति हासिल करेंगी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण। उसके पश्चात 11 बजे वो अपना 5वां वित्त बजट 2023-24 पेश करने वाली हैं। सबकी निगाहें वित्त मंत्री पर टिकी हैं, सबकी दिल की धड़कनें थोड़ी सी तेज हो रही हैं जैसा जैसा समय नज़दीक आ रहा है। बजट पेश करने का 11 बजे समय नियत है और उनके लाल रंग के पिटारे में कोई गैजेट है या फिर पिटारा है, वो भी उसका भी खुलासा उसी वक्त होगा जब वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आज अपना 5वां और 2023-24 का वित्त बजट पेश करेंगी। कैबिनेट मंत्री जो हैं बैठक में पहुंचना शुरू हो गए हैं। कैबिनेट की बैठक होने वाली है। 10:15 बजे का समय तय है इस बैठक का और इस बैठक में अनुमति दी जाएगी बजट पेश करने की वित्त मंत्री को और उसके पश्चात 11 बजे वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण वित्त बजट 2023-24 पेश करने वाली हैं। ये इसलिए भी महत्वपूर्ण है इस बार का बजट क्योंकि ये मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का ये अंतिम पूर्णकालिक बजट होने वाला है। दो विशेषज्ञ मेहमान माननीय सांसद गोपाल शेट्टी जी और अपारूपा पोद्दार जी हमारे साथ जुड़ गई हैं। और गोपाल शेट्टी जी, ऐतिहासिक तस्वीरें हैं। ऐतिहासिक तस्वीरें इसलिए भी हैं कि 5वीं बार वित्त मंत्री के तौर पर एक नारी शक्ति वित्त बजट पेश कर रही हैं। निश्चित बहुत ही गौरव और अभिमान की बात है कि इस बार दोनों जो हमारे देश के राष्ट्रपति है और देश के फाइनेंस मिनिस्टर, ये दोनों नारियां हैं और नारी शक्ति ही घर परिवार को आगे बढ़ाती है, देश को आगे बढ़ाती है। इसलिए हमें निश्चित इस बात का गर्व भी है और अभिमान भी है जी। और हमने भी लगातार स्टूडियो में नारी शक्ति का जो है संतुलन बनाए रखा है। प्रीति भी जुड़ गई हैं एक बार हमारे साथ में। ऐतिहासिक तस्वीरें। शुक्रिया प्रतिबिंब। बिल्कुल ऐतिहासिक तस्वीरें अपने आप में और देश का जो लोकतंत्र है उसकी खूबसूरती को बयां करती तस्वीरें भी हैं। जब एक महिला राष्ट्रपति महामहिम द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात महिला वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की हुई और अब कुछ ही पलों में 11 बजे देश के सामने आम बजट 2023-24 पेश होगा। और ये जो तस्वीरें आप लगातार देख रहे हैं, दोनों वित्त राज्य मंत्री और उनके साथ बीच में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण पेपरलेस बजट लगातार तीसरी बार आज पेश करेंगी। इससे पहले 2 बार पेपरलेस बजट हुआ और उसके बाद लगातार जो संसद है उसे पूरी तरह से पेपरलेस बनाने का काम जो है वो लगातार किया जा रहा है और बजट भी इसी कड़ी में हम देखें तो अब प्रतिबिंब पेपरलेस बजट हमारे सामने है। जी जी। और अपारूपा पोद्दार जी, यहाँ पर नारी शक्ति की बात चल रही है तो नारी शक्ति का कितना इस पर जो है फोकस रहेगा इस पूरे बजट को लेकर? क्या कुछ ढूंढ रही है भारत की नारी इस बजट में? हाँ, एक्चुअली कल हम लोगों के जो राष्ट्रपति जी द्रौपदी मुर्मू का स्पीच रहा, उसके बाद आज ही महिला एक नारी हमारे देश के वित्त मंत्री है और वो जो है आज बजट पेश कर रहे हैं। तो घर की एक महिला होने के नाते और हम लोग जब अपने क्षेत्र में और देश के हर कोने में जाते हैं तो वहाँ पर सब जगह का यही हम लोग ग्राउंड लेवल में देखते हैं कि नारी लोगों का जो पाठ रहा है सुबह से लेके रात तक, ये जो है घर दफ्तर से लेके सब कुछ संभलता है। तो फिर यहाँ पर जो है हम लोग सोचेंगे कि सबसे बड़ा बात है कि किचन पर इस बार बजट कहाँ कितना दूर तक ध्यान देते हैं हमारे निर्मला सीतारमण जी। प्याज काटते वक्त जो आंसू निकलते हैं वो आंसू ना निकले और साथ साथ जो एलपीजी के सिलेंडर्स है उस पर ध्यान दिया जाए, उसके बजट पर उसका जो प्राइस है जो दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं। क्योंकि देखिए हम जिस क्षेत्र से चुनकर आते हैं वहाँ पर राजा राम मोहन रॉय के व्यक्तित्व जैसे जन्म हैं जो खुद
ब्रिटिश साम्राज्य के टाइम में नारी शक्ति के सशक्तिकरण के लिए उन्होंने लड़ाई की है। तो जी, जी। ये गर्व की बात है। और हम जिस स्टेट से चुन के आते हैं और इन इंडिया हमारे इन इंडिया पहले ऐसा स्टेट है जो ऑल ओवर इन इंडिया एक ही मुख्यमंत्री महिला है। तो इस जगह पर हम लोग सोचेंगे कि हमारे वित्त मंत्री वो देश के वित्त मंत्री है और वो देश की साधारण नागरिक महिलाओं के बारे में सोचे, जो देश को आगे बढ़ाने के लिए बहुत एक अहम हिस्सा होगा। जी, जी। और सबसे बड़ी बात ये है कि पिछले कुछ वर्षों में किचन की दहलीज लांघ कर अलग अलग क्षेत्रों में भारत का परचम लहरा रही हैं हमारी भारत की नारियां। बिल्कुल। तो महिलाओं की उम्मीदों पर कितना खरा उतरेगा बजट? राष्ट्रपति ने अपने अभिभाषण में महिलाओं को लेकर खास तौर पे जिक्र भी किया कि किस तरह से सेना से लेकर और तमाम जो क्षेत्र हैं महिलाएं आगे आ रही हैं। मुद्रा योजना की बात की जाए तो सबसे ज्यादा जो लोन दिया गया उसमें महिलाएं सबसे आगे रही। आत्मनिर्भर भारत में बहुत मजबूत कड़ी महिलाओं को लेकर भी है। इसके अलावा अगर हम देखें गोपाल शेट्टी जी, G20 की अध्यक्षता एक बहुत बड़ा, मैं कहूं, एक पड़ाव है जो इस साल है। और प्रधानमंत्री ने कहा भी है कि जो जानी मानी अर्थव्यवस्थाएं दुनिया की हैं उन सब के बीच तेजी से वृद्धि होगी भारतीय अर्थव्यवस्था की। तो तमाम जो दुनिया भर के लोगों की नजरें इस समय भारतीय अर्थव्यवस्था को लेकर और उम्मीदें हैं, कितनी पूरी करता है बजट नजर आएगा? नहीं, कुल मिलाकर हम बात करेंगे और सोचेंगे तो पूरी दुनिया की नज़रें इन दिनों में तो भारत के ग्रोथ की ओर भी है। भारत किस तेजी से आगे बढ़ रहा है, देश के प्रधानमंत्री किस रफ्तार से देश को आगे बढ़ा रहे हैं। और अपराजिता बहन ने बहुत सही कहा कि देश की राष्ट्रपति महिला है, देश के बजट पेश करने वाली महिला है और उनके राज्य के एक मुख्यमंत्री भी महिला है। और मैं मानता हूं कि देश के प्रधानमंत्री ने गत 9 वर्षों में किचन के ऊपर ही बहुत ध्यान दिया है, महिलाओं के ऊपर ही बहुत ध्यान दिया है। इसलिए हर किचन में गैस पहुंचाने का काम किया, हर किचन में लाइट पहुंचाने का काम किया, हर किचन में काम करने वाली बहन की जीवन बहुत सरलता से आगे बढ़े, इसलिए ध्यान दिया है। और मैं मानता हूं कि इस बजट में भी महिलाओं के बारे में विशेष ध्यान दिया जाएगा, क्योंकि घर को खड़ा करने वाली जो हमारी माता होती है, बहनें होती है, इन्होंने देश को खड़ा किया है। भारत की संस्कृति को बचा के रखने का काम हमारे देश के महिलाओं ने किया, इसलिए महिलाओं के ऊपर विशेष ध्यान हर क्षेत्र में दिया जाता है। और निश्चित जिस रफ्तार से देश को आगे बढ़ाया हमारे देश के प्रधानमंत्री ने, अब हम सब लोगों को मिलकर ये आगे आने वाले दिनों के लिए सोचना होगा कि हमको देश को चलाना है या देश को आगे बढ़ाना है। देश को अगर आगे बढ़ाना है तो कुछ बातों के बारे में देश के नागरिकों ने भी अपने आप को सरकार के सिस्टम के साथ में जोड़ देना पड़ेगा। खाली हमें क्या लाभ होता है ये तो अपेक्षा करना ही चाहिए, सभी लोग सोचते हैं। हम पॉलिटिकल सिस्टम में जब काम करते हैं तो हर पॉलिटिकल इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव का अपेक्षा ये होता है कि सब ठीक ठाक चले और फिर हम चुनकर आए, फिर हमारी सरकार आए, ये तो अपेक्षा सबकी होती ही है। लेकिन सब लोगों ने ये देखने की भी आवश्यकता आने वाले दिनों में, जब हम दुनिया के बाजार में कॉम्पीट कर रहे हैं तो भारत देश बहुत तेजी से आगे बढ़े, इसमें हर व्यक्ति का अपना योगदान होना बहुत जरूरी है। ये मैं मानता हूं कि देश के लोग इस प्रकार की मानसिकता इन दिनों में आए भी है। और जैसे बहन ने कहा कि किचन के बारे में, तो 3 साल लगातार 80 करोड़ लोगों को फूड ग्रेन सप्लाई करना, ये पूरे दुनिया के इतिहास में पहली बार हुआ होगा। और ऐसे समय पे देश के प्रधानमंत्री को G20 का नेतृत्व करने का अगर मौका मिला भी है तो मैं मानता हूं कि भारत के 130 करोड़ लोगों की दुआएं उनके साथ में है, ये उसमें सबसे बड़ा मुद्दा है। समय जी, सुनील गुप्ता जी जुड़ गए हैं, आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद। आपका बहुत बहुत स्वागत है। यहाँ पर बात चल रही थी किचन की, किचन से बाहर निकलता हूँ और व्यवसाय जगत की बात करता हूँ। मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी, उसमें इजाफा हुआ है, निर्यात में बढ़ोतरी हुई है, और क्या कुछ आपको लगता है होना चाहिए कि इन दोनों क्षेत्रों में और ज्यादा गति जो है आ सके? देखिए, आज वित्त मंत्री जी निर्मला सीतारमण जी बजट पेश करने वाली हैं। हमारा हाईएस्ट टैक्स स्लैब 42% पे चला जाता है। उम्मीद करता है व्यापारी जगत के हाईएस्ट टैक्स स्लैब कम होगा और जो 5 लाख तक की जो फ्लैट स्लैब है वो स्लैब भी सामने आएगी, क्योंकि अभी तक छूटों के जरिए 5 लाख रुपए तक टैक्स नहीं लगता, परंतु एक फ्लैट स्लैब होनी चाहिए कि 5 लाख रुपए तक कोई टैक्स नहीं लगेगा। और जो कैपिटल गेन है उस पर भी लोग कुछ रिलीफ चाहते हैं। लोग चाहते हैं कि थोड़ा सा रिटर्न भरने की प्रक्रिया भी
आसान होनी चाहिए, क्योंकि हर व्यक्ति को प्रोफेशनल व्यक्ति के पास जाना पड़ता है, इन जटिल प्रक्रियाओं से निकलना पड़ता है। तो इस बजट के अंदर, क्योंकि पहले हमारे यहाँ टैक्स पेयर कम होता था, अब टैक्स पेयर बढ़ चुका है, तो टैक्स कम होना चाहिए। जीएसटी 18% से जीएसटी की कलेक्शन भी बहुत हो चुकी है, तो इनकम टैक्स का जो सिस्टम बनता है वो कहीं ना कहीं आसान होना चाहिए और ज्यादा से ज्यादा लोग इसके नेटवर्क के अंदर आए, ज्यादा से ज्यादा लोग आज अर्थव्यवस्था के साथ जुड़े, ज्यादा से ज्यादा लोग बैंकिंग सिस्टम में आए। उसके लिए कहीं ना कहीं टैक्स रेट को कम करना चाहिए और ये उम्मीद भी है महिलाओं के लिए एक विशेष प्रावधान इस बजट के अंदर लोग उम्मीद करते हैं निर्मला सीतारमण जी की तरफ से। बुजुर्गों के लिए जो सुपर सीनियर सिटीजन है उनके लिए भी अलग से कुछ राहत इसके अंदर चाहकर, स्पेशली लाइफ सेविंग मेडिसिन पे जो पिछली बार कुछ टैक्सेस वगैरह का प्रावधान कुछ कम होना चाहिए, बजट के माध्यम से भी ऐसी चीजें आए, इसके भी लोग उम्मीद करते हैं। बिल्कुल। अपरूपा जी, सुशील जी बता रहे हैं कि बुजुर्गों के लिए कुछ प्रावधान हो, टैक्स स्लैब को लेकर इस बार उम्मीद कर रहे हैं कि मध्यम वर्ग को भी राहत मिले, साथ ही जो कॉर्पोरेट टैक्स है उसमें भी कुछ राहत की उम्मीद हो, बुजुर्ग बैंकिंग सिस्टम में ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़े। हमने देखा है कि जब हम पेपरलेस बजट की बात कर रहे हैं, डिजिटल होते भारत की बात कर रहे हैं, किस तरह से हमने देखा डिजिटल पेमेंट एक क्रांति की तरह, एक बड़े कदम के रूप में कोरोना पीरियड के बाद तमाम आम लोगों के बीच आए और बैंकिंग सिस्टम से भी इस बहाने कहीं ना कहीं सीधे तौर पर लोग जुड़े हैं। आपकी उम्मीदें क्या हैं इस बार बजट से? मैं ये चाहता हूँ बैंकिंग सिस्टम जी से सुशील जी, अपरूपा जी से सवाल करेंगे, एक बार उनसे पूछ लेते हैं मोटे तौर पर क्या उम्मीदें और संभावनाएं वो देख रही हैं। आम कॉमन व्यक्ति को अगर टैक्स की रिटर्न भरनी पड़ती है तो बहुत जी अपरूपा जी से बात कर लेते हैं एक बार सुशील जी। व्यक्ति को रिटर्न भरने में 1.5 से 2 घंटे लग जाते हैं जब सीए के पास जाता है। एक साधारण व्यक्ति अगर उस फॉर्म को भरता है तो 2-3 दिन का ये काम हो जाता है। तो मैं यानी आप चाह रहे हैं स्मूथ सिस्टम हो और सिंगल विंडो क्लियरेंस, सिंगल विंडो रिड्रेसल की बात लगातार सरकार करती भी रही है और इस पर और तेजी से काम हो कहीं ना कहीं। अपरूपा जी, ये बात तो है कि जो सिंगल विंडो क्लियरेंस और रिड्रेसल की बात लगातार हो रही है कि लोगों को हर चीज के लिए चक्कर ना लगाने पड़े, बल्कि सारी जो उनकी शिकायतें हैं या जो काम है वो सिंगल विंडो के जरिए पूरे हों, और इस बात की कोशिश लगातार हो भी रही है जो हम सीधा तौर पर देख भी रहे हैं। अपरूपा जी, आप बताइए क्या उम्मीदें आपको लग रही है इस बार, आप क्या चाह रही हैं बजट में होना चाहिए? हाँ जी, देखिए सिंगल विंडो होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जो बुजुर्ग हैं या जो भी मध्यम वर्ग के लोग हैं जो दोनों हस्बैंड वाइफ जॉब कर रहे हैं, तो उन लोगों के लिए अगर टैक्स भरना को बहुत ईजी हो तो फिर उन लोगों को अपना जॉब भी ना स्किप करना पड़ेगा 1-2 दिन में। ऐसा होता है क्योंकि अगर हम लोग सब न्यूक्लियर फैमिली में हैं तो हम लोगों को क्या प्रॉब्लम्स होते हैं ये ग्राउंड लेवल में हम लोग काम करते हैं तो हम लोगों को मालूम है। लेकिन ये जो डिजिटल बैंकिंग का बात आया हुआ है तो इसमें जो है हमारे आज भी देश में कम से कम हम कहेंगे कि 50% जो पॉपुलेशन है जो अभी एंड्रॉयड मोबाइल या एक्सेसिबिलिटी रेट में थोड़ा सा वो लोग दूर है। तो इस जगह पर हम सोचते हैं कि यहाँ पर जैसे कनेक्टिविटीज़ प्रॉब्लम भी है, सब जगह कनेक्टिविटी का भी एक प्रॉब्लम है। उसके बाद उन लोगों को हम लोग देखे हैं कि काफ़ी बार नेट बैंकिंग करते वक्त उन लोगों को कुछ परेशानी भी प्रॉब्लम हुए हैं। तो ये तो एक सिस्टम है, सिस्टम धीरे धीरे अपडेट होंगे, लेकिन हमारे जो मूल प्रॉब्लम है या मूल चीज पर हम लोगों को फोकस करना चाहिए कि देश के अगर अर्थनीति पर हम लोग ध्यान देते हैं तो उसमें हम लोगों को किसान लोगों के बारे में सोचना चाहिए। घटनाक्रम बहुत तेजी से बदल रहा है और अपडेट जो है लगातार आ रहे हैं। हमारे सहयोगी सूरज मोहन झा कुछ अपडेट देने वाले हैं। कैबिनेट बैठक हो रही है, क्या कैबिनेट मंत्री पहुंच गए हैं? सूरज, क्या है अपडेट? आपने देखा होगा इस गेट नंबर 1 से जो मेरे पीछे है वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण बजट की कॉपी लेकर अपने सहयोगी मंत्री और अधिकारीगण के साथ अभी आई थी और अब यहाँ पर कैबिनेट मंत्रियों के आने का सिलसिला लगातार जारी है। अब से कुछ देर पहले ही वाणिज्य मंत्री और राज्यसभा में नेता सदन पीयूष गोयल, जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत, संसदीय कार्य राज्य मंत्री वी मुरलीधरन अभी कैबिनेट की बैठक के लिए गए हैं। परंपरा रही है प्रतिबिंब की जब वित्त मंत्री राष्ट्रपति भवन से यहाँ पर आती है और वहाँ से सहमति ले लेती है, उसके बाद संसद भवन प्रांगण में आकर इसी गेट नंबर 1 पर वह फोटो ऑप करती है। उसके बाद कैबिनेट की बैठक जो है वो
संसद भवन के ऊपर वाले मंजिल पर होती है, जिसमें कैबिनेट के सारे वरिष्ठ मंत्री मौजूद होते हैं। प्रधानमंत्री सूरज प्रधानमंत्री पहुंच गए हैं संसद भवन परिसर में। प्रधानमंत्री संसद भवन परिसर में पहुंच गए हैं और 10-10 का जो तय समय था इसका कैबिनेट की बैठक होने का, वो लगभग तय है। चूंकि सारे वरिष्ठ नेता भी पहले से ही प्रधानमंत्री के आने से पहले वहां पहुंच चुके थे, तो ये अब जो है थोड़ी देर बाद हमें देखने को मिलेगा। उस बैठक के बाद जब कैबिनेट अपनी अप्रूवल दे देगा इस बजट को, उसके बाद 11 बजे केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण देश का बजट लोकसभा में पेश करेंगी। जी, और अपडेट के लिए आपके पास आते रहेंगे। लेकिन हम देख रहे हैं कि सुबह जब संसद भवन परिसर के परिदृश्य की बात करें तो धुआं था, धुंध थी, ठंड थी, और अब धीरे धीरे सूरज चमकने लगा है। गोपाल जी, कुछ रिलेवेंस है, कुछ प्रतीक है ये सूरज निकलने का? निश्चित आज का सूरज सामान्य लोगों के जीवन में एक नई रोशनी डालेगी। और कल राष्ट्रपति के 22 पन्ने के 82 मुद्दों को उन्होंने छुआ है। तो इन सारे मुद्दों में आपने देखा होगा कि सामान्य व्यक्ति, मध्यम वर्गीय व्यक्ति के बारे में बहुत सोचा गया है, उच्च मध्यम वर्गीय व्यक्तियों के बारे में भी सोचा गया है। कुल मिलकर सबका साथ सबका विकास के जब देश के प्रधानमंत्री बात करें तो टोटलिटी में सब कुछ स्पर्श करने का काम किया है। बस से लेकर ई व्हीकल से लेकर हवाई जहाज में सफ़र करने वाले लोगों के, मतलब 82 मुद्दों में सारा का सारा इसमें आया है। और निश्चित ही ये बजट में आने वाले दिनों में सामान्य लोगों को कैसे आसानी हो उसके बारे में भी रोड मैप देखने के लिए मिलेगा। और देश किस रफ्तार से आने वाले दिनों में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो, या तो एजुकेशन के सिस्टम में हो, हेल्थ के सिस्टम में हो, किसानों के बारे में भी बहुत गहराई से प्रधानमंत्री सोचते हैं, काम करते हैं। लेकिन आपके सहयोगी माननीय सांसद आम आदमी पार्टी के, उन्होंने टैक्स का एक विषय उठाया और व्यवसाय से जुड़ा हुआ मुद्दा था। उन्होंने कहा कि टैक्स कलेक्शन बढ़ रहा है तो टैक्स का रेट कम क्यों ना किया जाए, और भी ज्यादा लोग जो है उत्साहित होंगे और टैक्स कलेक्शन और भी ज्यादा बढ़ेगा। एक बात। दूसरा, पिछले 9 बरस से मध्य वर्ग के लिए टैक्स स्लैब में कोई परिवर्तन नहीं किया गया है, तो क्या माना जाए, चूंकि ये अंतिम पूर्णकालिक बजट है मोदी 2.0 सरकार का, और हो सकता है कि शायद कुछ लोक लुभावने मुद्दे या फिर बिंदु भी इसमें समाहित किए जाएं, तो क्या टैक्स स्लैब को भी उस बिंदु में माना जाए? देख, हमारे देश के प्रधानमंत्री वैसे कोई लोक लुभावने मुद्दे के बारे में वो कभी सोचते नहीं। वो बहुत गंभीरता से देश को आगे बढ़ाए, देशवासियों को आगे बढ़ाए, ये उनका मुद्दा होता है। जहाँ तक आप टैक्स कलेक्शन अगर ज़्यादा आता तो एक बात को हम सब लोगों ने ध्यान में लेने की आवश्यकता है कि 3 साल तक देश में, कोरोना के 2 साल में तो इनकम तो आया ही नहीं, लेकिन आउटगोइंग खर्चे सारे शुरू थे। उसके बावजूद भी देश को नियंत्रित रखना, महंगाई दर को बहुत कंट्रोल में रखना, ये कितनी बड़ी बात है। अब एक सत्ता पक्ष के सांसद के नाते मैं ये कहूँगा कि लुभावनी बात तो मैं भी यहाँ पर बैठ के 15 मिनट में कर सकता हूँ, लेकिन उससे लोगों के जीवन मान में तो कोई बदलाव नहीं आने वाला है। एक जगह पे आप समझो टैक्स में रिलीफ अभी देते हैं तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं भी देते हो तो मैं उनको लोगों को इस तरह से समझाने का प्रयास करूंगा कि टैक्स बेनिफिट में आपको समझो रिलीफ दे दिया और महंगाई दर आपका बहुत ऊंचा रहा, तो एक हाथ से लिया और दूसरे हाथ में गया। ये है ना, बजट क्या होता है कि जितने टैक्स के माध्यम से पैसे आते हैं सरकार की तिजोरी में, वही पैसे से देश का विकास होता है, सीधी बात है। इसलिए दोनों, एक तो महंगाई दर नियंत्रण में रहना, ये मानता हूं कि बहुत बड़ा रिलीफ है, क्योंकि आपके पास पैसे अगर बचते हैं तो ही आप आगे उसको चल सकते हो ना। इसलिए दोनों बातों को हमको सोचना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, और देश को चलाने वाले लोगों ने, नगरजनों को समझाना भी पड़ेगा। मैं मानता हूं कि हमारे देश के लोग अगर सही बात सही ढंग से समझाते हैं तो समझने की क्षमता हमारे देश के लोगों में पैदा होते जा रही है। जी, गोपाल जी ने जो बात कही है सुशील जी, टैक्स स्लैब को लेकर लगातार सरकार ये कहती रही कि सीधे तौर पर टैक्स स्लैब अगर कम नहीं भी हो रहा है, लेकिन इनडायरेक्टली आम आदमी को फायदा हो रहा है। जिस तरह से लगातार हम 2014 से अगर बजट की बात करें, सरकार यही कहती रही है, उसका फोकस जो गांव है, जो गरीब हैं, जो किसान हैं, उनकी आय दुगनी करने पर रहा है, जो आम लोग हैं उन्हें फायदा पहुंचाने पर रहा है। तो सीधे तौर पर टैक्स स्लैब का फायदा ना देखें, लेकिन आप मान रहे हैं कि इनडायरेक्ट जरूर सरकार के कदमों का असर कुछ सकारात्मक पड़ रहा है। आय डबल कर देंगे, ये कहा गया कि किसान के आय डबल कर देंगे, आय किसी की डबल नहीं हुई। ये कहा गया कि हम देश की अर्थव्यवस्था तेजी से आगे बढ़ेगी, परंतु जब तक ज्यादा से ज्यादा लोगों का उसके अंदर सहयोग नहीं होगा, ज्यादा से ज्यादा लोग उस नेटवर्क के अंदर जुड़ेंगे नहीं, और ज्यादा लोगों को जोड़ने के लिए हमें सरल करना पड़ेगा। अगर टैक्स स्लैब को गरीब व्यक्ति को राहत नहीं मिलेगी, पिछले काफी समय से जब महंगाई का इंडेक्स बढ़ गया है, रसोई चलनी मुश्किल हो गई है,
जीएसटी आटे पे लग गया, दाल पे लग गया, चावल पे लग गया, दही पे लग गया, छाछ पे लग महंगाई गया। थोड़ा बताइए जब सब सुशील जी, जगह टैक्स किस लग गया देश में कम हो रही है तो महंगाई? थोड़ा सा हमें समझना पड़ेगा ना, महंगाई तो डबल डिजिट में जा रही है दुनिया भर में। तो थोड़ा जिस तरह से गोपाल जी कह मैं रहे वही हैं कि कह रहा लोगों हूँ। को समझाना होगा, जब दुनिया आशा भरी नजरों से देख रही है, हम G20 की अध्यक्षता कर रहे हैं, हर कोई अर्थव्यवस्था को लेकर तमाम कयास लगा रहा है, तो सुझाव एक सकारात्मक तरीके से सामने आए आप लोगों की तरफ से, ये कोशिश होनी चाहिए क्या? मैं आपको एग्जैक्टली यही बात कर रहा हूँ। जब सरकार ने आटे पे, दही पे, चावल पे, सब चीजों पे टैक्स लगा दिया है, तो कम से कम इनकम टैक्स में तो उस गरीब व्यक्ति को राहत दे। जो वेतन भोगी व्यक्ति है उसका उसका सब कुछ एक नंबर में चलता है। हिंदुस्तान के अंदर 2 नंबर की अर्थव्यवस्था भी है, मगर सबसे ज्यादा मार वेतन भोगी के ऊपर पड़ती है। अगर उसको वहां पे टैक्स पूरा देना पड़ रहा है, जीएसटी उसकी कई गुना बढ़ गई है, खाने पीने की हर रसोई के हर आइटम पे जीएसटी पहुंच गया है। और इनकम टैक्स के अंदर स्लैब में अगर राहत नहीं देंगे, कितने साल तक नहीं देंगे? हर साल जीएसटी बढ़ता चला गया और इनकम टैक्स में राहत मिली नहीं, तो उसके ऊपर डबल मार मर रही जी लग जी। रही है। इस डबल मार से आम व्यक्ति बचना चाहता है, बचे। और वित्त मंत्री से ये उम्मीद की जाती है कि इस बजट के अंदर, आपके चुनाव से पहले ये आखिरी पूरा बजट है, इस बजट के अंदर कम से कम लोगों की उम्मीदों पे खरा उतरे। किस तरीके से वित्तीय फ्रॉड हो रहे हैं आप देखिए। 5 लाख करोड़ रुपए आपने का जो बात कही है घोटाला सुशील जी, पिछले वो उस पर सप्ताह रिएक्शन तक ले हुआ। लेते हैं। अपारूपा जी हमारे साथ अडानी मौजूद हैं। समूह अपारूपा के जी, यहाँ पर शेयर बात की जा रही कितने है नीचे गिर महंगाई को गया। लेकर, LIC टैक्स कम किए के जाने ऊपर चाहिए, वो पूरे भी एक पैसे लग- जो है आशा जताई जा रही है इस वित्त बजट को लेकर। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात, पिछले 2.5-3 वर्ष में जो वैश्विक चुनौती थी कोरोना की, उसको हमने बहुत ही सफलतापूर्वक उससे हमने पार पाया। इसके अतिरिक्त 80 करोड़ लोगों को 3 साल तक लगातार मुफ्त अनाज दिया जाना, उस चुनौती को किस तरीके से जो है सक्षम तरीके से हमने उसका सामना किया, उसका एक बहुत बड़ा परिचायक है। अब जबकि हम अमृतकाल में आ गए हैं, पिछले अगले 25 साल का रोड मैप बनाने के लिए ये बजट बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। तो उस बजट में खर्च के साथ साथ आय कैसे बढ़े देश की सरकार की, वो भी महत्वपूर्ण है। तभी हम आधारभूत ढांचा सुधार पाएंगे या महिलाओं, गरीबों, किसानों की मदद कर पाएंगे। क्या ये मानते हैं आप? देखिए, सुशील जी ने बहुत अच्छा बात कहा है कि हमारे जो देश की अर्थव्यवस्था है, हम लोग, आपने कहा कि अभी कोरोना काल में 3 साल तक उन्होंने देश के प्रधानमंत्री जो खाने पीने के सब चीज़ के सुविधा दिए हैं। लेकिन एक बात बताइए, ये तो देश के प्रधानमंत्री के दायित्व है, इससे तो कोई दूर नहीं हट सकता है। लेकिन हमारे कहने का मतलब है कि कोरोना में तो सभी देश को फेस किए हैं, और हमारे कोरोना काल में जितने देश के प्रधानमंत्री के साथ साथ देश के पब्लिक भी सब मिलजुल के सहयोग किए। लेकिन आज जिस जगह पर उन्होंने जो जीएसटी गिनाए हैं, अब बताइए, दूध पर, मुरमुरे पर, हर चीज़ पर जीएसटी लगाना, और आप हीरे पर नहीं लगा रहे हो। आप जो गरीब लोगों या मिडिल क्लास सबसे ज़्यादा यूज़ करते हैं, उस चीज़ पर आप लोग जीएसटी कर रहे हो, तो ये तो ठीक बात नहीं है। आम आदमी के लिए आप क्या सोच रहे हो, और नौकरी पर क्या सोच रहे हो? आपने 2 करोड़ नौकरी के वादे दिए थे हर साल, आज 9 साल हो गए, तो 18 करोड़ नौकरी कहाँ गया? अगर आप ये जो अनएम्प्लॉयमेंट दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं, अगर हम एडुकेशन के बात करें, एडुकेशन लेने के बाद बच्चे बाहर चले जा रहे हैं, दूसरे कंट्रीज में जा रहे हैं, तो इसका क्या रोड मैप इस बजट में हम लोग भी तो देख रहे हैं। क्योंकि देश के युवा जो है, देखिए, लोकतंत्र में जिस तरह हम लोग, इंडिया जो लैंड ऑफ कल्चर फेस्टिवल है, हम लोग जैसे पूजा पाठ सब चीज़ करते हैं, साथ साथ देश के हर इंसान का नज़र एक ही दिन पर टिका रहता है लोकतंत्र में, ये बजट, कि हमको क्या, देश को क्या मिलने वाला है, आम जनता को क्या मिलने वाला है। तो ये जो बात है ना, कि इस पर बहुत गंभीर से सोचना पड़ेगा। इस पर आप स्पष्टीकरण दे पाएंगे? और ठीक एक बात और जिक्र करूंगी, जो आर्थिक सर्वेक्षण आया गोपाल जी, वो ये कह रहा है कि बहुआयामी गरीबी सूचकांक, जो यूएनडीपी की 2022 की रिपोर्ट है, उसके रिजल्ट ये हैं कि 2005-6 से और 2019-20 के बीच भारत में करीब 42 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा से बाहर निकाला गया। अगले दशक के लिए, जब हम आगे के 25 साल का टारगेट लेके चलते हैं, अगले दशक के लिए आप क्या मानते हैं कि गरीबी से लोगों को और तेजी से बाहर निकाला जाए? किस तरह का बजट होना चाहिए? निश्चित, मैं मानता हूं कि बहन जी के
सारे सवालों का जवाब आप ही नहीं दे जाएगा। 42% लोग गरीबी रेखा से बाहर निकले हैं। हाँ, यानी 2005 से 2020 का से आंकड़ा है। निश्चित 2005 से 2022 तक। आखिर देश तो हम सभी लोग मिलकर चला रहे हैं ना। कांग्रेस और यूपीए के सरकार ने किस तरह से चलाया, एनडीए की सरकार किस तरह से चलाया, लेकिन टोटलिटी में तो 2005 से 2022 तक इतने बड़े पैमाने पे गरीबी रेखा से बाहर लोग निकले हैं। और ये रफ्तार अभी बहुत तेजी से आगे बढ़ेगा। 2014 से 2022 तक जो रफ्तार था, ये रफ्तार और भी तेजी से आगे बढ़ेगा। और एक बात बहन जी ने भी कहा कि हमको देश के बारे में सोचना पड़ेगा, और देश के प्रधानमंत्री अगला चुनाव या तो फिर उसके अगले चुनाव के बारे में नहीं सोच रहे। देश के प्रधानमंत्री ने 25 साल का रोड मैप बनाया है कि अगले 25 साल में भारत देश को कहाँ जाना है। भारत देश आगे बढ़ता है तो देश के लोग भी उसके साथ में आगे बढ़ेंगे ना। आखिर इसका मापदंड क्या है, कोई भी देश आगे बढ़ता है। G20 का नेतृत्व देश के प्रधानमंत्री को भारत देश को मिलना, भारत देश आगे बढ़ रहा है तब तो दिया ना। नहीं तो एक दिन तो मेंबरशिप के लिए हमको लाले पड़ रहे थे। मेंबरशिप अगर किसी बड़े देश के बैठक में जाकर करना, उसके वादे थे, तो आज हम उनका नेतृत्व कर रहे हैं G20 के माध्यम से। कितनी बड़ी बात है, देश भी तो आगे बढ़ रहा है ना। मैं एक व्यक्ति के नाते बहुत सुखी हो जाऊँ, संपन्न हो जाऊँ, मेरे पास बहुत सारे प्रॉपर्टी आ जाएगी, लेकिन मेरा देश का सम्मान दुनिया के नक्शे में अगर गिरेगा तो मेरा बड़ा होने का कोई मतलब ही नहीं है। इसलिए देश का पूरा फोकस और देश के प्रधानमंत्री का पूरा फोकस जो है वो सामान्य व्यक्ति कैसे खड़ा हो। एजुकेशन के बारे में निश्चित हम इस बात का दावा नहीं करते कि 8 साल में सब कुछ हो गया। 22,000 बच्चे जब यूक्रेन के युद्ध में से बाहर निकालना पड़ा तो एक देश में हमारे देश के 22,000 बच्चे जाते हैं, ये हमारे देश के लिए बहुत गौरव की बात नहीं है, ये हमको चिंता करने वाली बात है। लेकिन उसके बारे में भी तो प्रधानमंत्री ने सोचा है ना। एडीआई विदेशी लोगों को कहा कि आप यहाँ पर आकर इंस्टीट्यूशन खोलिए, और इस बात के ऊपर तो मैं भी इस बात से सहमत हूँ कि बहुत गंभीरता से हमको सोचना पड़ेगा। मैं जब सोचता हूँ तो हमारे देश के बच्चे सिर्फ पढ़ाई करने के लिए बाहर नहीं जाते हैं, तो फिर वहाँ पर वो सेटल हो जाते हैं। हमारे देश के अच्छे ब्रेन्स सब अगर देश से बाहर चले जाएंगे तो फिर यहाँ तो सिर्फ पॉलिटिकल पार्टी के मोर्चा में जाने के लिए लोग बचेंगे, जिससे तो देश आगे बढ़ेगा नहीं ना। इससे देश आगे बढ़ेगा नहीं। तो हमारे देश के सुपर ब्रेन जो है वो इसी देश में पढ़े, इसी देश में व्यवसाय करे। इसलिए तो देश के प्रधानमंत्री स्टार्टअप इंडिया की बात करते हैं, स्टैंड अप इंडिया की बात करते हैं, आत्मनिर्भर की बात करते हैं। तो ये होगा। अभी 75 साल का जो बैकलॉग, 67 साल का 8 साल को अगर मैं माइनस भी करता हूं तो 8 साल में तो ये सब कुछ हो जाना चाहिए। इसकी अपेक्षा तो देश का एक सामान्य व्यक्ति भी करता नहीं है। और शायद इसीलिए नई जो है शिक्षा नीति भी इंट्रोड्यूस की गई है, ब्रेन ड्रेन ना हो। लेकिन सुशील जी, यहाँ पर मैं बात कर लेता हूँ व्यवसाय जगत की। निर्माण के क्षेत्र में मजबूती आई है, हमारा निर्यात भी जो है बहुत तेज हुआ है, और सबसे बड़ी बात यह है कि निर्माण के उन क्षेत्रों में तेजी आई है जिसमें हम आयात किया करते थे, और वो सीधे तौर पर हमारी रक्षा से जुड़ा हुआ था। रक्षा उत्पाद न केवल हम मेड इन इंडिया करने लगे हैं, साथ ही साथ बड़ी संख्या में हम इन रक्षा उत्पादों का निर्यात भी कर रहे हैं। बहुत बड़ा बदलाव आया है। ये बात सही है कि आयात निर्यात के क्षेत्र के अंदर बदलाव आया है, बदलाव की जरूरत भी है। पूरे देश ने चाइना के साथ संबंध खराब होने के बाद में चाइना से इंपोर्ट पे पाबंदी लगाने की बातें की, कम करने की बात की, परंतु उसके बावजूद भी चाइना से हमारा इंपोर्ट बढ़ता चला गया। हम आत्मनिर्भर जब बनेंगे जब ब्लू चिप से लेके अच्छी कंपनियां हमारे देश में आएंगी। अभी कंपनियों ने जब चाइना से निकली तो हमारे देश के अंदर हम नहीं ला पाए। कहीं ना कहीं इसको सोचना पड़ेगा कि हम अपने कानूनों को सरल करें। आने जो पूरे देश और दुनिया को ग्लोबल सिटी बनाना है, अगर हिंदुस्तान के अंदर सारी दुनिया के लोगों को इनवाइट करना है, अगर हिंदुस्तान के ब्रेन को यहाँ पे रोकना है, अगर हिंदुस्तान के अंदर बुजुर्ग एक अव्यवस्था के बाद अकेले घर पे ना रहे, बच्चे माइग्रेट कर जाते हैं, इसके लिए अच्छे उद्योग यहाँ पे लगे। और सबसे ज्यादा जरूरत है कृषि पे आधारित उद्योग लगे। आज देखिए गोभी 2 रुपए किलो बिक रही है, टमाटर गाय को डालना पड़ रहा है। किसान की जो पोजीशन है गोभी की, टमाटर की, ये बाकी चीजों की सब्जियां, इस कदर उसको जो फसल बोता है उसकी कीमत नहीं मिल पा रही है। 2 रुपए 2.5 रुपए किलो चीजें बिक रही हैं। तो क्या ये इस पे आधारित अगर उद्योग लगे होते तो हमारे देश का ये किसान फसल के समय पे सारी दुनिया के अंदर उसका प्रोडक्ट जाता, उसका फिनिश प्रोडक्ट बनता, उसको कीमत मिलती, उसकी हालात सुधरती, सरकार को सब्सिडी नहीं देनी पड़ती। जो 1000-2000 रुपए साल की सरकार दे देती है और कहते मैंने किसान के ऊपर बहुत बड़ा एहसान कर दिया। अरे हमारे देश के 70% लोग कृषि पर आधारित हैं।
वित्त मंत्री को चाहिए कृषि आधारित उद्योगों को प्राथमिकता दे, उनको गांव गांव में जाके वो उद्योग लगे ताकि हमारी फसल प्रोसेस होके दुनिया के कोने कोने के अंदर जाए और किसान हमारा खुशहाल हो सके। आज भी मेरे देश के किसान को अगर बेटी को शादी करनी है तो कर्ज लेना पड़ता है, बच्चे को हायर एजुकेशन में भेजाना है तो कर्ज लेना पड़ता है। कहीं ऑस्ट्रेलिया का किसान, अमेरिका का किसान हेलीकॉप्टर से अपने खेत में छिड़काव करता है, यूरोप का किसान मस्ती कार से जाता है। मेरे देश के किसान के पास इनके सपने तो नहीं है हेलीकॉप्टर का, मस्ती ठीक है, कार गोपाल जी से किसानों को अच्छी लेकर जूती जवाब ले उसके लेते पैर हैं में सुशील पहनने जी के आपके लिए सवाल का। इन बातों को देश की सरकारें बिल्कुल पार्टी सुशील कोई जी, भी रहे, ठीक है, जब एक एक पॉइंट सत्ता पे के अंदर चलते हैं। पार्टी आती है तो सोचना गोपाल जी, पड़ेगा किसानों की कि आय मैं दुगनी करने की बात थी 2022 तक, हम जानते हैं बीच में कोरोना का पीरियड रहा, इसलिए चीजों पर धक्का लगा है। किसान यही एक सेक्टर है जिसने कोरोना काल में भी बड़ा सपोर्ट दिया है। क्या कर रहे हैं किसानों को लेकर? देखिए, किसानों की आय दुगनी करने के बारे में बहुत सारा कदम उठाया गया। किसान सहमत भी है कुछ बातों से। 100% तो कोई भी व्यक्ति कभी भी समाधानी नहीं होगा। जिस दिन सब लोग समाधानी हो जाएंगे तब ये देश का रफ्तार रुक जाएगा। देश तो चलता रहेगा, दुनिया चलता रहेगा, लेकिन किसानों को अगर उनके हाथ में दो पैसे जाने चाहिए तो जो नॉन किसान है उनका माइंडसेट को हमको बदली करना पड़ेगा। हम होटल में जाते हैं तो 250 रुपया 500 रुपये का डिश एक डिश के लिए दे देते होटल में, लेकिन किसान अगर 2 रुपया टमाटर के लिए ज़्यादा मांगता है, 2 रुपया बटाटे के लिए ज़्यादा मांगता है, तो उसके बारे में फिर बातें होती है, आंदोलन होते हैं। तो किसानों को आपने ज़्यादा देना चाहिए, उनका हक का पूरा पैसा उसको मिलना चाहिए। इसके बारे में हमको सोचना पड़ेगा, इसके बारे में ओपन माइंड से डिबेट करना पड़ेगा। सरकार को भी तो दिशा कौन देता है? मीडिया के माध्यम से दिशा मिलती है सरकार को, जनता की आवाज़ के माध्यम से दिशा मिलती है सरकार को। तो सारे पॉलिटिकल पार्टी के लोगों ने मिलकर इसके बारे में बातचीत करनी होगी। सरकार जो भी के साथ साथ गोपाल जी, सबसे महत्वपूर्ण यह है कि ये एक मौका होता है बजट का, इसमें आप क्या किसी समस्या का समाधान दे रहे हैं या नहीं दे रहे हैं, तो क्या इस समस्या का समाधान भी इस बजट में होगा? निश्चित होगा। अपर्पा बहन ने जो एजुकेशन की बात बताई, महाराष्ट्र के सरकार ने, देखिए हमारा देश किस तरह से चलता है। मद्रास के एक स्कूल में आग लग गई। मद्रास के स्कूल में तो वहाँ पर डेवलपमेंट कंट्रोल रूल ही नहीं था। बाकी कुछ शहरों में, मुंबई शहर में तो डेवलपमेंट कंट्रोल रूल सबसे पहले से है, लेकिन स्कूल के हाइट कितनी होनी चाहिए इसके ऊपर रिस्ट्रिक्शन आ गया। अब स्कूल के हाइट रिस्ट्रिक्शन आ गया तो नए नए स्कूल बनने बंद हो गए। मेडिकल महंगा हो गया, मेडिकल का बिल्डिंग कितना हाइट का होना चाहिए इसके ऊपर कोर्ट के माध्यम से रिस्ट्रिक्शन आ गया। अब महाराष्ट्र की सरकार ने कल ही निर्णय ले लिया है कि स्कूल और हॉस्पिटल के जो हाइट रिस्ट्रिक्शन थे वो निकल गए। यानी इसका मतलब आने वाले दिनों में एजुकेशन की जो बहन जी ने मुद्दा उठाया, जो समस्या है, उसमें से हम लोग बाहर निकले हैं। और ये रेस्ट्रिक्शन के एक पॉइंट आपने उठाया, जी हाँ, तमाम विभागों का जो बजट होता है तमाम राज्यों से वैसा का वैसा ही वापस आ जाता है, कई जगह पूरा इस्तेमाल भी नहीं होता। तो ये भी एक स्मूथ इकोसिस्टम बनाना भी कितना जरूरी है आगे। अगर हम इतनी बड़ी इकोनॉमी की बात कर रहे हैं, $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी की बात होगी, तो तमाम फैक्टर्स पे ध्यान देना होगा। मैं एक बात से बहुत दुखी भी हूँ और चिंतित भी हूँ। जब देश के बारे में सोचता हूँ तो केंद्र सरकार जो जनहित के लिए जो निर्णय बनाती है, उस निर्णय को सभी राज्य के लोगों ने मान लेना चाहिए। अपार्ट फ्रॉम पॉलिटिकल डिफरेंसेस, राजकीय हमारे मतभेद हो सकते हैं, लेकिन देश के प्रधानमंत्री कहते हैं कि बिजली मिलना चाहिए तो सबको बिजली मिलना चाहिए, पानी मिलना चाहिए तो सबको मिलना चाहिए, एजुकेशन सबको मिलना चाहिए तो सबको मिलना चाहिए। इसके बारे में भी समझो केंद्र सरकार जो पैसा देती है उसका कंस्ट्रक्शन नहीं करोगे, बिल्डिंग नहीं बनाएंगे। आज सारा इसमें लेखा जोखा आ गया है ना। कितने एम्स देश में खुले हैं 2014 के बाद में? विश्वविद्यालय कितने देश में खुले हैं 2014 से 2022 तक? जितने आजादी के 67 साल में नहीं खुले, उतने 8 साल में खुले। तो कह रहे गोपाल जी की अच्छे सुझाव मिलने चाहिए, और प्रधानमंत्री ने भी कहा कि तकरार हो तकरीर भी हो। तो किस तरह से सकारात्मक माहौल देखेंगे हम? तो तमाम अभिभाषण पर भी चर्चा होती है, बजट पर भी चर्चा होती है। मैं चाहूंगा कि जो हुआ है उसका स्वागत करो, और अपेक्षा क्या है वो बात रखिए, उसके बारे में सब लोग मिलकर काम करेंगे तो देश आगे बढ़ेगा। हाँ, गोपाल जी ने सही कहा है कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। लेकिन ये बात सही में पन्नों पे नहीं, हकीकत में हो तो सही में हम लोग सब चाहेंगे कि अपने देश आगे बढ़े, दुनिया में अपना देश का एक अलग पहचान बने। ये सब इंडियन का, अपार्ट फ्रॉम पॉलिटिकल पार्टी, हर देश के नागरिक को ये अपेक्षा रहती है। लेकिन आज बताइए, हमारे जो देश के परिस्थिति है उस पर जो कह रहे हैं कि गोपाल जी ने जो सवाल उठाया ना, सवाल ये उठाया कि केंद्र से मध्य में जाता है पैसा अलग अलग विकास कार्यों के लिए, वो इस्तेमाल ही नहीं होता, वो वापस आ जाता है। बता रही हूं मैं। ठीक है अपूर्वा जी, माफ कीजिएगा, तस्वीरें थोड़ी सी हम बता दें। आप देख पा रहे हैं इस समय संसद भवन से ये सीधी तस्वीरें, जो बजट की कॉपी हैं वो संसद भवन परिसर पहुंच चुकी हैं, और ये जो तमाम बजट की कॉपी हैं वो तमाम सांसदों को
दी जानी होती हैं और बेहद कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच ये सारा काम होता है। जैसा आप तस्वीरों में भी देख पा रहे हैं, इस समय मंत्रिमंडल की बैठक चल रही है। मंत्रिमंडल की मंजूरी के बाद ठीक 11 बजे जब संसद की कार्रवाई शुरू होगी, लोकसभा में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण बजट पेश करेंगी और ये सीधी तस्वीरें बजट की कॉपियों को लेकर आप संसद भवन परिसर से देख पा रहे हैं। जी हाँ, तमाम प्रक्रिया पूरी होती हुई बजट पेश करने से पहले की राष्ट्रपति से मुलाकात की, उनसे अनुमति प्राप्त की। वित्त मंत्री ने कैबिनेट की बैठक चल रही है, वहां से अनुमति मिलेगी और बजट की प्रतियां भी पहुंच गई हैं संसद भवन। और कुछ देर के पश्चात, जैसा कि मेरी सहयोगी प्रीति कह रही हैं, 11 बजे वित्त बजट 2023-24 पेश करने वाली हैं वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण। बिल्कुल, और इसके बाद भी एक अहम पड़ाव होता है जब वित्त मंत्री प्रेस कॉन्फ्रेंस करती हैं। जो तमाम घोषणाओं के मुख्य पॉइंट्स होते हैं बजट में, उस पर पत्रकारों के सवाल और जवाब होंगे। एक एक जो बारीक विश्लेषण होगा वो कहीं ना कहीं अपनी बात साफ करेंगे वित्त मंत्री। उससे पहले 11 बजे का इंतजार है। तस्वीरें आप जो लगातार आ रही हैं वो टीवी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि बजट पेश होने से पूर्व और बजट पेश होने के पश्चात बाजार क्या कहता है, वो भी कहीं ना कहीं कहानी बयां करता है कि किस तरीके का बजट पेश किया गया और किस तरीके के बजट की अपेक्षा थी बाजार को। और बाजार आज 437 अंक ऊपर उठकर आज शुरू हुआ है। तो मैं ये कहूँगी, गोपाल जी ने कहा कि इंफ्रास्ट्रक्चर बना है, इसमें कोई हम लोग किंतु परंतु नहीं करते। लेकिन अगर हमारे पास एम्स नए बने हैं तो उसमें डॉक्टर्स की वैकेंसीज क्या फिलअप हुए हैं? अगर हमारे यूनिवर्सिटीज़ बने हैं तो क्या उसमें वैकेंसीज फिलअप की हैं? क्योंकि अगर टीचर्स नहीं, प्रोफेसर्स नहीं रहेंगे तो फिर पढ़ाएगा कौन स्टूडेंट्स को? और दूसरी बात है कि अगर दूसरे राज्य में पैसे जाते हैं तो वो यूटिलाइज नहीं होते हैं। नहीं, क्योंकि हमारे हम जब पॉलिटिक्स के शुरुआती दौर में हम नगर पालिका से उठ के आए हैं, मुझे मालूम है कि फंड फ्लो जो है गवर्नमेंट से ऐसे टाइम में वो पहुंचते हैं कि आपका टेंडर प्रोसेसिंग से लेके इसमें काफ़ी कम से कम 1-1.5 महीना टाइम लगते हैं। लेकिन अगर टाइम पर, जिस हिसाब से गवर्नमेंट अगर टाइम पर पैसा राज्य को भेजते हैं तो ज़रूर इस पर जो है टाइम से कार्रवाई होती है। क्योंकि हम लोग सब कोई चाहते हैं कि चाहे मिड डे मील का पैसा हो, चाहे आपके और भी सर्व शिक्षा अभियान का पैसा हो, ये सब पैसा टाइम से मिले। आज बताइए, जो चाइल्ड लेबर के लिए एक प्रोजेक्ट बनाया हुआ था पिछले गवर्नमेंट ने, यूपीए गवर्नमेंट ने, वो ये गवर्नमेंट ने बंद कर दिए। वो क्या था कि रैक पिकर्स को 14 साल तक हम लोग पढ़ाएंगे। लेकिन ये जो है आपका जो चाइल्ड लेबर के बच्चे लोगों को, जो रैक पिकर्स है, उनको जो ये पढ़ाए जाते हैं, ये प्रोजेक्ट को पूरे बंद कर दिए गए। इस तरह के बहुत सारे प्रोजेक्ट्स को बंद कर दिए जा रहे हैं। ये चीज़ होने नहीं चाहिए। ये हमारे और सबसे बड़ी बात यह है कि संसद के भीतर की बात हो या स्टूडियो के भीतर की बात हो, पक्ष और विपक्ष का जो विचार है ना, वो अलग अलग परिलक्षित होता रहा है और अभी भी परिलक्षित हो रहा है। खूबसूरती भी है, मैं और क्योंकि आप तीनों माननीय सांसदों को जाना है, संसद भवन में बजट की कार्रवाई का हिस्सा भी बनना है। एक प्रश्न जो है सुशील जी से पूछ लिया जाए। सुशील जी, ये बड़ी बात है। एक जाहिर तौर पर एक स्मूथ सिस्टम की भी बात है। जब हम अच्छे इकोसिस्टम की बात करते हैं, स्टार्टअप को लेकर दुनिया में हमने बहुत मैं कहूँ कि सबसे अच्छे इकोसिस्टम में से एक दिया हुआ है। भारत के अंदर हम देख रहे हैं तेजी से स्टार्टअप बढ़ रहे हैं, यूनिकॉर्न्स बड़े बड़े खड़े हो रहे हैं। यानी कहीं ना कहीं अगर स्मूथ फ्लो है चीजों का तो चीजें अपने आप और बेहतर होती दिखाई देंगी। बजट को लेकर जब बात की जा रही है, तमाम जो विभाग हैं, जो अलग अलग सेक्टर्स हैं, अलग अलग राज्य हैं, उन्हें जो बजट एलोकेशन होता है कई बार वो पूरी तरह से यूटिलाइज नहीं होता। इसे लेकर आप क्या कहेंगे? जी जी, और इसके साथ ऐड ऑन करना चाहता हूं कि आपने समस्याओं की और तो ध्यान दिलवाया है। इस बजट में क्या प्रावधान आप देखना चाहते हैं? मैं देखना चाहता हूँ शिक्षा का जो बजट है ना, वो कम से कम 6% होना चाहिए, जो 3.25% भारत सरकार का है। हेल्थ का बजट हमारा बढ़ना चाहिए। ये जो बेसिक प्राइमरी सेक्टर है, हेल्थ एंड एजुकेशन, ये हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को मिलनी चाहिए। हमने नई एजुकेशन पॉलिसी भी लगाई, हमने राइट टू एजुकेशन एक्ट भी बनाया, परंतु क्या राइट टू एजुकेशन एक्ट के हिसाब से हर 3 किलोमीटर पे स्कूल होना चाहिए, हर 1 किलोमीटर पे प्राइमरी स्कूल होना चाहिए, आबादी के साथ होना चाहिए? क्या ये हम आज से क्रिएट कर पाए? ये तब क्रिएट होंगे जब बजट के अंदर प्रोविजन होगा। अगर भारत सरकार कमीशन जो तय किया था आज से 20 साल पहले,
उसने 7% एजुकेशन पे लगाने की बात करी थी। आज तक भी हम 3.25% भारत सरकार एजुकेशन पे लगा रही है। राज्य सरकारें कहीं कहीं, दिल्ली सरकार की मैं बात करूँ, 26% एजुकेशन के ऊपर लगा रही है, हेल्थ के ऊपर 13% लगा रही है। हम 2% के करीब केंद्र सरकार है। लेकिन सुशील जी तो मैं आपको रोकना चाहता हूं। अगर भारत ये आप जिस प्रतिशत की बात कर रहे हैं शिक्षा पर खर्च करने की, वो सरकारी खर्च की बात कर रहे हैं। कुल मिलाकर अगर देखा जाए जो भारत में शिक्षा पर खर्च होता है वो 26% से ज्यादा है। मैं तो केंद्र सरकार के बजट की बात कर रहा हूँ। केंद्र सरकार का भी तो दायित्व बनता है ना भारत सरकार के, हिंदुस्तान शिक्षित हो, हिंदुस्तान विकसित हो, तभी तो हिंदुस्तान विकसित होगा। 75 साल देश की आजादी को हो गए, अभी हम विकासशील श्रेणी से निकल नहीं पाए हैं। विकसित देशों के ऊपर हमें सोचना पड़ता है कि वहां हम कैसे जाएं, तभी हिंदुस्तान जाएगा जब हिंदुस्तान शिक्षित होगा। और ये बजट के अंदर पैसा बढ़ाना चाहिए। मैं निर्मला सीतारमन जी से करबद्ध प्रार्थना भी करता हूँ कि इस ओर ध्यान दें। बिल्कुल, यानी अभी जो हालिया रिपोर्ट्स रही हैं शिक्षा को लेकर वो यही बताती रही हैं कि कोरोना महामारी का असर सबसे ज्यादा शिक्षा पर पड़ा, लेकिन उसके बाद खासकर जो गांव के स्कूल्स हैं वहां ड्रॉप आउट रेट कम हुआ है, लोग ज्यादा अब फॉर्मल एजुकेशन की तरफ बढ़े हैं। लेकिन जो टीचर और स्टूडेंट्स का रेशियो है, जो स्कूल को लेकर इंफ्रास्ट्रक्चर है, आपका सुझाव है सुशील जी कि लगातार उसे और अच्छा बनाया जाए और जो शिक्षा व्यवस्था है उसको लेकर बजट का एलोकेशन और ज्यादा हो। उम्मीद कर रहे हैं कि जो आपकी पॉइंट्स हैं उन पर भी कहीं ना कहीं वित्त मंत्री का गौर होगा और देखना होगा शिक्षा और स्वास्थ्य को लेकर, क्योंकि स्वास्थ्य पे तो हमने एक बड़ा बदलाव देखा है कोविड के बाद, एक बड़ा बदलाव रहा और एक बड़ा हिस्सा जो बजट का है वो स्वास्थ्य की तरफ मुड़ा है। तो ऐसे में और कितना दायरा इसका बड़ा होता देखेंगे बजट के अंदर, इस पर जरूर नजरें रहेंगी। 11 बजे 20 मिनट का करीब करीब का वक्त है प्रतिबिंब, जब बजट पेश होगा और देखना होगा कि जो तमाम लोगों के साथ साथ हमारी दिल की धड़कन भी लगातार बढ़ रही है। लेकिन शिक्षा के अनुपात की यहाँ पर बात कही है आपने कि वो लगातार बढ़ा है। अनुपात की बात करें तो लड़कियों का स्कूल जाना भी, उसकी संख्या में भी इजाफा हुआ है। ये एक बहुत बड़ा पक्ष है। बिल्कुल। और जैसा मैंने आपको बताया कि जो हालिया रिपोर्ट है, चाहे वो शिक्षा मंत्रालय की रही हो या अलग से जो एनजीओज अपने आप शिक्षा को लेकर रिपोर्ट्स तैयार कर रही हैं, वो यही इशारा कर रही हैं कि सरकारी स्कूलों में नामांकन बढ़ रहा है लगातार। लेकिन बड़ी बात यही है कि जो टीचर और बच्चों का रेशियो है गांव में खास तौर पर, उस पर ध्यान देना होगा। जो डिजिटल डिस्पैरिटी की बात है गांव और शहरों में को लेकर, उस पर जाहिर तौर पर ध्यान देना होगा ताकि डिजिटली कनेक्ट हो गांव के लोग। इसके लिए एक बड़ा पुश क्या बजट के जरिए निकलता हम देखेंगे। इंफ्रास्ट्रक्चर पर बहुत बड़ा जोर पिछले बजट में रहा, इस बार भी इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ साथ क्या और ऐसे आयाम रहेंगे जहां बजट का फोकस रहेगा ताकि जो $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी की बात हम कर रहे हैं उस पर हम और तेजी से आगे बढ़ सकें। भले ही जो तमाम अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियां हैं, IMF हो, वर्ल्ड बैंक हो या फिर जो तमाम बड़े अर्थशास्त्री हैं, वो भारत की तरफ उम्मीद भरी नजरों से देख रहे हैं और उसमें बजट में जो भी छोटे और बड़े कदम हैं वो कहीं ना कहीं एक पुल साबित होंगे, एक ब्रिज साबित होंगे एक बड़ी अर्थव्यवस्था की ओर बढ़ने के लिए। और सबसे बड़ी बात, जब अन्य देशों की जीडीपी हमसे बेहतर रहती है, आर्थिक विकास दर हमसे ज्यादा रहता है, तो तुलना की जाती है। जब हम और अन्य देशों से बेहतर स्थिति में है, दुनिया की सबसे तेज गति से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था बन गए हैं, तब इस और कम लोगों का ध्यान जाता है। बिल्कुल। सुशील जी, आपने स्वास्थ्य और शिक्षा को लेकर बातें कही हैं, बिल्कुल बुनियादी ये बातें भी हैं, कुछ सुझाव आपने दिए हैं। इसके अलावा आपने टैक्स को लेकर कुछ सुझाव दिए हैं। आप चाह रहे हैं कि रियायत टैक्स पर सीधे तौर पर भी दिखाई देनी चाहिए बजट में। अब 20 मिनट बाद, करीब करीब 15-16 मिनट बाद बजट आने वाला है। बताइए और बड़े पॉइंट्स आप क्या चाहते हैं जो शामिल होने चाहिए। किसान की हालत सुधरे, महिलाओं को विशेष रियायत मिले, टैक्स की मैंने आपको बता दिया, हेल्थ और एजुकेशन के ऊपर सेक्टर में कुछ न कुछ बजट की परसेंटेज बढ़े और ग्रामीण क्षेत्र के अंदर उद्योग विशेष तौर पे लगे ताकि हमारा जो देश मुख्य तौर पे कृषि पे आधारित देश है, उस देश की जो मुख्य अर्थव्यवस्था है, जो कोरोना के अंदर भी जिस क्षेत्र में किसानों ने बचा के रखा है, उनकी आय को बढ़ाना है तो उनकी फसल प्रोसेस होकर दुनिया के हर हिस्से के अंदर जानी चाहिए। मैं वित्त मंत्री जी से निवेदन करना चाहूंगा कि जो कृषि पर आधारित उद्योग हैं उनके लिए एक स्पेशल स्कीम निकाले, उन उद्योगों को प्रोत्साहित करे। वो जहाँ पे जिस किस्म की फसल होती है, मैं पिछले वर्ष लेह लद्दाख गया था, अगर मैं वहां की बात करूं
तो आधी फसल नहर में बह जाती है, कीड़े लग जाते हैं, प्रोसेस नहीं हो पाती। मैं एप्रिकॉट की बात करता हूँ। एप्रिकॉट हमारे देश के लेकिन अंदर इतना बजट जो अच्छा होता है पैदा होता है कि सारी दुनिया सुशील जी का केवल परंतु खर्च का ब्यौरा नहीं होता बजट। खर्च कितना हुआ, कितना पैसा जो है सरकार के खाते में आया और कितनी बचत हुई, ये तीनों का लेखा जोखा होता है। आप जो बिंदु उठा रहे हैं उसमें खर्च की बात तो की जा रही है, आय कैसे बढ़े सरकार की। जब आय सरकार की बढ़ेगी तभी अलग अलग क्षेत्रों पर खर्च हो पाएगा ना। आय तो जीएसटी हर चीज पे लगा दिया, आय तो बढ़े रही है। आपका जो नहीं, जीएसटी की आपने जीएसटी की बात कही है, तो जीएसटी को लेकर एक बहुत बड़ी संशय की स्थिति है। और संशय की स्थिति यह है कि जब जीएसटी काउंसिल की बैठक होती है उससे पूर्व आप ही के पार्टी के राजनेता इस बात को कहते हैं कि पेट्रोलियम पदार्थ जो हैं वो कहीं ना कहीं जीएसटी के मद में आने चाहिए, उसके अंतर्गत आने चाहिए। लेकिन जब जीएसटी काउंसिल की वो बैठक होती है तो जीएसटी के अंतर्गत आने चाहिए, इस बात को बिसरा दिया जाता है। अब आपके पार्टी का, आपका अपना व्यक्तिगत मत क्या है? क्या पेट्रोल डीजल के दाम जीएसटी के दायरे में लाए जाने चाहिए? हम एक जानकारी दे रहे हैं, कैबिनेट की बैठक हो चुकी है। कैबिनेट की बैठक के पश्चात अब वित्त मंत्री जाएंगी संसद भवन और 11 बजे के करीब आम बजट 2023-24 पेश करेंगी। बिल्कुल, और ये तस्वीरें बजट की कॉपियों की आप देख रहे हैं। बजट जो पेश किया जा रहा है वो पेपरलेस है। ये तमाम जो कॉपी हैं वो तमाम सांसदों को दी जानी है। बजट की कॉपीज आप देख रहे हैं। बस कुछ ही पलों का इंतजार, करीब 9 मिनट बाद संसद का सत्र शुरू होगा। दूसरा दिन है आज। बजट सत्र की शुरुआत कल हुई राष्ट्रपति के अभिभाषण के साथ। पहला दिन महिला राष्ट्रपति के नाम रहा, दूसरा दिन भी बजट का महिला वित्त मंत्री के नाम रहेगा। और आज हम वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को संसद में 11 बजे लोकसभा में बजट पेश करते देखेंगे और इसके बाद राज्यसभा में भी बजट की कॉपी रखी जाएगी। ये जो तस्वीरें हैं ये बजट की कॉपियों की हैं, जो हरे रंग के कपड़े से आप सील्ड देख रहे हैं। बहुत कड़ी सुरक्षा व्यवस्था होती है इन कॉपियों को लेकर भी। किसी भी तरह कोई भी लाइन बजट पेश होने से पहले बाहर ना आए, इसे लेकर पूरा इंतजाम किया जाता है। और ये संसद भवन परिसर कॉपियां पहुंच चुकी हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण केंद्रीय मंत्रिमंडल के साथ बैठक करके बजट पर मंजूरी ले चुकी हैं और अब बस कुछ ही पलों बाद देश के सामने होगा वित्त वर्ष 2023-24 का आम बजट। जी हाँ, क्या ये बजट $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाने वाला बजट होगा? क्या 25 बरस के भीतर भारत को विकासशील देश से विकसित राष्ट्र बनाने वाला बजट होगा? सबकी निगाहें इस बात पर टिकी रहेंगी। उस वक्त की तस्वीर जब राष्ट्रपति भवन से निकलकर वित्त मंत्री पहुंची थी संसद भवन परिसर में, और संसद भवन में प्रवेश करने से पूर्व उन्होंने वो अपना पैकेट दिखाया लाल कलर का, जो अभी तक रिवील नहीं हो पाया है कि इसमें गैजेट है या फिर क्या कुछ है, जिसके ज़रिए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आज बजट पेश करने वाली है। लेकिन उसके पश्चात कैबिनेट की बैठक हुई। कैबिनेट से मंजूरी मिलने के पश्चात 11 बजे वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 2023-24 का वित्त बजट पेश करने वाली है। बिल्कुल, और बड़ी बात 2017 से जो हमने देखी है, रेलवे बजट और आम बजट एक साथ मिला है, तो रेलवे को लेकर भी क्या बड़ी घोषणाएं होंगी, इस पर भी नजर होगी। और आपको बता दें कि 2017 से जो बजट पेश हो रहा है उसमें रेल बजट को आम बजट से जोड़ा गया और अब हर साल आम बजट ही पेश होता है। जी जी, और वृद्धों को क्या कुछ मिलने वाला है इस बजट से? क्या अलग अलग योजनाओं के जरिए उनको कुछ छूट, कुछ लाभ इस बजट में दिए जाने वाले हैं? उन लाभों और छूटों में से एक है रेल यात्रा के दौरान जो 50% की छूट वृद्धों को मिलती थी, वो कोरोना काल की वजह से रोक ली गई थी, स्थगित कर दी गई थी। क्या उसकी वापसी इस बजट में होने वाली है? इस पर भी सबकी निगाह टिकी रहेंगी। बिल्कुल सुशील जी, बस कुछ ही पल और बचे हैं बजट को लेकर और जैसी बात भी हो रही है कि तमाम आप लोग के सुझाव काफ़ी अच्छे सुझाव होते हैं और सरकार ये चाहती भी है कि अलग अलग जो दल हैं वो अपने सुझाव दें ताकि अगर सुधार की कोई गुंजाइश है तो वो किया जा सके। लेकिन जाहिर तौर पर जैसा प्रतिबिंब ने भी कहा कि खर्च और आय में संतुलन बनाना एक बड़ी चुनौती होती है। उन सब के बीच सरकार के कदमों को कैसे देख रहे हैं? और सबसे बड़ी बात है, प्रधानमंत्री ने जो कहा है कि भारत का आम बजट दुनिया के लिए आशा की किरण बनेगा। न केवल भारत
वासी इस बजट पर निगाहें टिकाए हैं, बल्कि पूरा विश्व देखना चाहता है कि विश्व की सबसे तेज गति से आगे बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था का इस बार का वित्त बजट कैसा होता है। प्रधानमंत्री बड़ी ने बात देखिए प्रतिबिंब, हाँ, जो चाहे वो यूनियन बजट को डाउनलोड कर सकता है। लगातार जो वेबसाइट है वो आप टीवी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, वहां से जो बजट की कॉपी है वो देखी जा सकती है। और 11 बजे से आप सीधे सीधे संसद टीवी पर वित्त मंत्री का जो बजट भाषण है उसका सीधा प्रसारण भी देख सकते हैं। डिजिटल संसद ऐप पर भी बजट का सीधा प्रसारण है, साथ ही बजट की कॉपी को भी डाउनलोड किया जा सकता है। और indiabudget.gov.in पोर्टल पर बजट संबंधी जो तमाम दस्तावेज हैं वो उपलब्ध हैं। जी हाँ, कुछ क्षण पश्चात इस वेबसाइट पर जा सकते हैं, बजट देख सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं। और इसके अतिरिक्त हम बता रहे हैं कि टेलीविज़न स्क्रीन पर संसद टेलीविज़न के माध्यम से तो बजट पेश करता हुआ आप देख सकते हैं वित्त मंत्री को। इसके अलावा आप यूट्यूब चैनल के माध्यम से भी न केवल संसद की आज की गतिविधि, संसद भवन परिसर में वित्त मंत्री के द्वारा वित्त बजट 2023-24 पेश करता हुआ आप देख पाएंगे संसद टीवी के यूट्यूब चैनल पर भी। ये वो तस्वीरें जब राष्ट्रपति भवन से निकलकर संसद भवन परिसर में प्रवेश कर रही थी वित्त मंत्री, उस दौरान की ये तस्वीरें हैं। और 2019 से पहले हमने देखा था कि वित्त मंत्री बही खाते के रूप में बजट को एक सूटकेस में रखकर लाया करते थे, लेकिन 2019 के बाद से हम देख रहे हैं कि जो वित्त मंत्री हैं वो बजट फाइल को लाल कपड़े में लपेटकर संसद पहुंचती हैं। और इस फाइल को जो हम देख रहे हैं तस्वीरों में वित्त मंत्री के साथ वही एक लाल रंग का जो एक तरह से मैं कहूं कवर है, उसके अंदर क्या होगा अब कुछ ही पलों में देश के सामने होगा। जी हाँ, कल प्रधानमंत्री ने जो बयान दिया था, उन्होंने कहा था कि रोजगार, स्वास्थ्य, शिक्षा और कृषि क्षेत्र पर केंद्र सरकार का विशेष जोर है। वित्त मंत्री इन अपेक्षाओं को पूरा करने की भरपूर कोशिश करेंगी। तो क्या एक संकेत माना जाए प्रधानमंत्री की इस बयान को, और माना यह जाए कि रोजगार, स्वास्थ्य, शिक्षा और कृषि क्षेत्र पर इस बार के बजट का सारा ध्यान रहने वाला है। और सबसे बड़ी बात, दो बड़े आयोजन जो है इस देश में हो रहे हैं। G20 की अध्यक्षता मिली है। इस बार का सम्मेलन G20 का भारत में होने वाला है। इसके अलावा अमृत काल में हम प्रवेश कर गए हैं और अमृत काल को लेकर देश के विभिन्न हिस्सों में अलग अलग कार्यक्रम हो रहे हैं। तो इन दो जो समारोह की बात करें, उसका भी रिफ्लेक्शन क्या परिलक्षित होता है इस बार के आम बजट में, सबकी नजर इस बात पर भी टिकी रहेंगी। सुशील जी, एक आखिरी रिएक्शन, जैसा प्रधानमंत्री ने भी कहा कि अर्थव्यवस्था दुनिया की जानी माने जो आवाजें हैं बड़ी अर्थव्यवस्थाओं से जुड़ी हुई, वो देश के लिए सकारात्मक संदेश दे रही है कहीं ना कहीं। और बजट के ऊपर सिर्फ भारत की नजरें नहीं है बल्कि दुनिया भर की नजरें हैं, और ये आशा की किरण भी बढ़ेगा। तो आप लोग का रोल किस तरह से रहेगा बजट भाषण में के बाद जो चर्चा होगी? कोई डाउट नहीं है कि हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था, हिंदुस्तान के व्यापार के ऊपर सारी दुनिया की नजर होती है कि किस तरीके से आजकल जो व्यापार का ग्लोबलाइजेशन सिस्टम हो गया है, हर देश के बजट के ऊपर हर देश के नागरिक की नजर रहती है। हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था बहुत महत्वपूर्ण अर्थव्यवस्था है। हिंदुस्तान के अंदर क्या हो रहा है, एक बड़ा देश होने के नाते सारी दुनिया इस तरफ देखना चाहती है, और हिंदुस्तान की जनता भी देखना चाहती है कि वित्त मंत्री कैसा बजट पेश करेंगी, क्या गृहिणी दे पाएंगी, क्या रसोई के बोझ को कुछ कम कर पाएंगी, क्या हिंदुस्तान के किसान की हालत को सुधार पाएंगी। हिंदुस्तान वासी भी देखते हैं और दुनिया के लोग भी देखते हैं, और मेरी शुभकामनाएं हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि निर्मला सीतारमण जी आज हिंदुस्तान के लोगों की आशाओं के अनुरूप बजट दे, ताकि कम से कम चुनावी वर्ष के अंदर तो लोगों की उम्मीद पूरी हो सके। पिछले कई वर्षों से लोग उम्मीद करते थे कि कुछ न कुछ राहत मिलेगी, इस वर्ष ये राहत की उम्मीद की जा रही। आर्थिक सर्वेक्षण की बात करें तो उसमें 6 से लेकर 6.8 जीडीपी रहने का अनुमान जताया गया है। ये अनुमान आपको लगता है कि सही है, या फिर इससे और भी बेहतर होना चाहिए या हो सकता है? अगर हम आर्थिक जो अपराध होते हैं, आर्थिक घोटाले होते हैं, उनके ऊपर कड़ा लगाम रख के रखें, और जैसे
बहुत से लगातार कई सालों से देश में फ्रॉड हुए और अब पिछले हफ्ता भी बड़ा भारी फ्रॉड हुआ। तो इन लगामों को कस के रखें। नियम कानून तो बने हुए बहुत हैं, परंतु नियम कानून का पालन सबके लिए एक जैसा हो तो मैं समझता हूं कि आर्थिक विकास के अंदर मिलेगी। वैसे तो बिल्कुल। आर्थिक सर्वेक्षण में 1% विकास दर को घटा हुआ दिखा है। अंतर्राष्ट्रीय जो बाजार है उसको देखने से मुझे लगता है कि आर्थिक जो हमारी जीडीपी की ग्रोथ है वो 5% के करीब होनी हाँ चाहिए, जो बिल्कुल। पिछले मुख्य आर्थिक 7-8% सलाहकार कह रहे हैं कि जो 6.8 तक का टारगेट है, करीब 6% से लेकर हम अपर लिमिट में ही रहेंगे, यानी 6.5% के आसपास। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और बातचीत के लिए सुशील जी। और सीधा एक बार हम चलते हैं, सूरज मोहन झा हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। सूरज, बताइए क्या अपडेट है? बस कुछ ही पलों का इंतजार, 5 मिनट का समय बचा है, मंत्रिमंडल की बैठक हो गई, क्या अपडेट मिल रहा है? बिल्कुल प्रीति, यहाँ पर अब जो है हम देख रहे हैं संसद भवन में काफ़ी गहमागहमी है। जिस तरह से थोड़ी देर पहले अभी कैबिनेट हुई है और उसने बजट को अप्रूव किया है, उसके बाद अब सांसद, तमाम दलों के सांसद जो हैं वो संसद भवन में आ रहे हैं और ये सुरक्षा कर्मी जो हैं अपनी जो है ड्यूटी को पूरा करते हुए उन सभी पैकेट्स को चेक किया जा रहा है जिनमें वो प्रतियां हैं जिसमें बजट निहित है। और ये प्रतियां, जैसा कि हमारी सहयोगी प्रीति पहले बता चुकी हैं, ये सारी प्रतियां जो हैं बजट की वो माननीय सांसदों को वितरित की जाएंगी। और जैसा कि हमारे सहयोगी भी अपडेट कर रहे थे कि अब काउंटडाउन शुरू हो चुका है। सभी माननीय सांसद संसद भवन परिसर में पहुंचना शुरू हो चुके हैं और 11 बजे वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण अपना 5वां वित्त बजट पेश करने वाली हैं। बिल्कुल। और साथ ही जैसा साथ प्रतिबिंब आप बता रहे थे कि 17वीं लोकसभा का ये अंतिम पूर्ण बजट होगा, और हमने देखा था इससे पहले जो सबसे बड़ा बजट भाषण रहा है वो भी वित्त मंत्री के नाम रहा है, 2 घंटा 41 मिनट। जी तो एक नजर कहीं ना कहीं इस पर भी रहेगी। पिछली बार करीब 1.5 घंटे का रहा था वित्त मंत्री का जो बजट भाषण था, 2020 में वो रिकॉर्ड रिकॉर्ड तोड़। बना था। जी जी, तो ये भी देखना होगा कि आज जो बजट रहेगा वो कितना बड़ा रह सकता है, कितना विस्तृत रह सकता है। और विस्तार इसलिए भी संभावना उसकी नज़र आ रही है क्योंकि जैसा कि $5 ट्रिलियन की जो है अर्थव्यवस्था बनाने का बजट हो सकता है, इसके साथ साथ ये अमृतकाल का बजट है, यानी कि देश को विकासशील देश से विकसित राष्ट्र बनाने की ओर ले जाने वाला बजट भी ये हो सकता है। और सबसे बड़ी बात ये है कि जैसा कि आपने इस बात को दोहराया भी है कि मोदी सरकार 2.0 का ये अंतिम पूर्णकालिक बजट है। तो 3 महत्वपूर्ण बिंदु इस और कहीं ना कहीं इशारा करते हैं प्रीति कि ये बजट भी काफ़ी बड़ा हो सकता है और काफ़ी समय लेने वाली हैं वित्त मंत्री इस बार के बजट को पेश करने में। बिल्कुल। तो बस कुछ ही देर में बजट होगा आपके सामने। 2023-2024 को लेकर जो आम बजट है, ठीक 11 बजे वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण इसे पेश करने वाली हैं। लगातार संसद टीवी पर इसकी सीधा प्रसारण, संसद की जो सत्र है, उसकी कार्रवाई है, उसका सीधा प्रसारण आप संसद टीवी पर देख सकते हैं। तो ठीक 11 बजे हमारे साथ बने रहिए। लगातार बजट के बाद भी जो हर बारीक विश्लेषण होगा वो भी आप संसद टीवी पर देख सकते हैं। तो संसद की कार्रवाई का सीधा प्रसारण अब से कुछ देर में।
माननीय सभासदों, माननीय अध्यक्ष जी, आइटम नंबर 1 माननीय वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण जी। Honorable Speaker, I present the budget for 2023-2024. This is the first budget in Amrit Kal. This budget hopes to build on the foundation laid in the previous budget and the blueprint drawn for India at 100. We envision a prosperous and inclusive India in which the fruits of development will reach all sections and citizens, especially our youth, women, farmers, OBCs, scheduled castes, and scheduled tribes. In the 75th year of our independence, the world has recognized the Indian economy as a bright star. Our current year's economic growth is estimated to be at 7%. It is notable that this is the highest among all the major economies. This is in spite of the massive slowdown globally caused by COVID-19 and the war. The Indian economy is therefore on the right track and despite a time of challenges, heading towards a bright future. Today, as Indians stand with their head held high and the world appreciates India's achievements and successes, we are sure that elders who had fought for India's independence will, with joy, bless us in our endeavors going forward as well. Our focus on wide-ranging reforms and sound policies implemented through Sabka Prayas, resulting in Jan Bhagidari and targeted support to those in need, helped us perform well in trying times. India's rising global profile is because of the several accomplishments: unique world-class digital public infrastructure, example, Aadhaar, CoWIN, and UPI. COVID vaccination drive in unparalleled scale and speed, proactive role in frontier areas such as achieving the climate-related goals, Mission Life, and National Hydrogen Mission. During the COVID-19 pandemic, we ensured that no one goes to bed hungry with a scheme to supply free food grains to over 80 crore persons for 28 months. Continuing our commitment to ensure food and nutritional security, we are implementing from 1st January 2023 a scheme to supply free food grain to all Antyodaya and priority households for the next 1 year. Under PM Garib Kalyan Anna Yojana, the entire expenditure of about 2 lakh crore will be borne by the central government. In these times of global challenges, the G20 presidency gives us a unique opportunity to strengthen India's role in the world economic order. With the theme of Vasudhaiva Kutumbakam, we are steering an ambitious, people-centric agenda to address global challenges and to facilitate sustainable economic development. The government's efforts since 2014 have ensured for all citizens
a better quality of life and life of dignity. The per capita income has more than doubled to 1.97 lakh rupees. In these 9 years, the Indian economy has increased in size from being 10th to 5th largest in the world. We have significantly improved our position as well as a well-governed and innovative country with a conducive environment for business as reflected in several global indices. We have made a significant progress in many sustainable development goals. The economy has become a lot more formalized as reflected in the EPFO membership, more than doubling to 27 crore and rupees 7,400 crore digital payments of 126 lakh crore rupees through UPI in 2022. The efficient implementation of many schemes with universalization of targeted benefits has resulted in inclusive development. Some of the schemes are 11.7 crore household toilets under Swachh Bharat mission, which is achieved, 9.6 crore LPG connections under Ujjwala, 220 crore COVID vaccination of 102 crore persons, 47.8 crore PM Jan Dhan bank accounts, insurance cover for 44.6 crore persons under PM Suraksha Bima and PM Jeevan Jyoti Yojana, and cash transfer of 2.2 lakh crores of rupees to 11.4 crore to over 11.4 crore farmers under PM Kisan Samman Nidhi. Our vision for the Amritkal includes technology-driven and knowledge-based economy with strong public finances and a robust financial sector. To achieve this, Jan Bhagidari through Sabka Saath, Sabka Prayas is essential. The economic agenda for achieving this vision focuses on 3 things. First, facilitating ample opportunities for citizens, especially the youth, to fulfill their aspirations. Second, providing strong impetus to growth and job creation. And third, strengthening macroeconomic stability. To service these focus areas in our journey to India at 100, we believe that the following 4 opportunities can be transformative during Amritkal. Economic empowerment of women. Deen Dayal Antyodaya Yojana National Rural Livelihood Mission has achieved remarkable success by mobilizing rural women into 81 lakh self-help groups. We will enable these groups to reach the next stage of economic empowerment through formation of large producer enterprises or collectives, with each having several thousand members and managed professionally. They will be helped with raw materials supply and for better design, quality, branding, and marketing of their products. Through supporting these policies, they will be enabled to scale up their operations to serve the large consumer markets, as has been the case with the several startups growing into unicorns. PM Vishwakarma Kaushal Samman, PM Vikas. For centuries, traditional artisans and craftspeople who work with their hands using tools have brought renown for India. They're generally referred to as Vishwakarma. The art and the handicraft created by them
represents the true spirit of Atmanirbhar Bharat. For the first time, a package of assistance for them has been conceptualized. The new scheme will enable them to improve the quality, scale, and reach of their products, integrating them with the MSME value chain. The components of the scheme will include not only financial support, but also access to advanced skill training, knowledge of modern digital techniques, and efficient green technologies, brand promotion, linkage with local and global markets, digital payments, and social security. This will greatly benefit the scheduled castes, scheduled tribes, OBCs, women, and people belonging to the weaker sections. Tourism. The country offers immense attraction for domestic as well as foreign tourists. There is a large potential to be tapped in tourism. The sector holds huge opportunities for jobs and entrepreneurship for youth in particular. Promotion of tourism will be taken up on mission mode with active participation of states, convergence of government programs, and public-private partnerships. Green growth. We are implementing many programs for green fuel, green energy, green farming, green mobility, green buildings, and green equipment, and policies for efficient use of energy across various economic sectors. These green growth efforts help in reducing carbon intensity of the economy and provides for large-scale green job opportunities. Priorities of this budget. The budget adopts the following 7 priorities. They complement each other and act as the Saptarishi guiding us through the Amritkal. Inclusive development, reaching the last mile, infrastructure and investment, unleashing the potential, green growth, youth power, and financial sector. I now speak on the priority number 1, inclusive development. The government's philosophy of Sabka Saath, Sabka Vikas has facilitated inclusive development covering in specific farmers, women, youth, OBCs, scheduled castes, scheduled tribes, Divyangjan, and economically weaker sections, and overall priority for the underprivileged, Vanchiton ko Variyata. There has also been a sustained focus on Jammu Kashmir, Ladakh, and the Northeast. This budget builds on those efforts. Digital public infrastructure for agriculture. Digital public infrastructure for agriculture will be built as an open source, open standard, and interoperable public good. This will enable inclusive farmer-centric solutions through relevant information services for crop planning and health, improved access to farm inputs, credit and insurance, help for crop estimation, market intelligence, and support for growth of agri-tech industry and startups. An agriculture accelerator fund. An agriculture accelerator fund will be set up to encourage agri-startups by young entrepreneurs in rural areas. The fund will aim at bringing innovative and affordable solutions for challenges faced by farmers. It will also bring in modern technologies to transform agricultural practices, increase productivity and profitability. To enhance the productivity of extra long staple cotton, we will adopt a cluster-based and value chain approach through public-private partnerships. This will mean collaboration between farmers, state, and industry
for input supplies, extension services, and market linkages. We will launch an Atmanirbhar Clean Plant program to boost availability of disease-free, quality planting material for high-value horticultural crops at an outlay of 2,200 crores. Global hub for millets which are Sri Anna. India is the forefront. India is at the forefront of popularizing millets, whose consumption furthers nutrition, food security, and welfare of farmers, said the Honorable Prime Minister. We are the largest producer and second largest exporter of Sri Anna in the world. We grow several types of Sri Anna, such as Sri Anna Jowar, Sri Anna Ragi, Sri Anna Bajra, Sri Anna Kutu, Ramdana, Kangni, Kutni, Kutki, Kodo, China, and Sama. These have a number of health benefits and have been an integral part of our food for centuries. I acknowledge with pride the huge service done by small farmers in contributing to the health of fellow citizens by growing these Sri Anna. Now, to make India a global hub for Sri Anna, the Indian Institute of Millet Research, ideally Indian Institute of the Sri Anna Research, Hyderabad, will be supported as the center of excellence for sharing best practices, research, and technologies at the international level. The agricultural credit target will be increased to 20 lakh crores with focus on animal husbandry, dairy, and fisheries. We will launch a new sub-scheme of PM Matsya Sampada Yojana, which is an existing scheme, but we launch a new sub-scheme with targeted investment of 6,000 crores to further enable activities of fishermen, fish vendors, and micro and small entrepreneurs, improve value chain efficiencies, and expand the market. For farmers, especially small and marginal farmers and other marginalized sections, the government is promoting cooperative-based economic development model. A new Ministry of Cooperation was formed with a mandate to realize the vision of Sahkar Se Samriddhi. To realize this vision, the government has already initiated computerization of 63,000 primary agricultural credit societies with an investment of 2,516 crores. In consultation with all the stakeholders and the states, model bylaws for PACS were formulated, enabling them to become multi-purpose PACS. A national cooperative database is being prepared for countrywide mapping of cooperative societies. With this backdrop, we will implement a plan to set up massive decentralized storage capacity. This will help farmers store their produce and realize remunerative prices through sale at appropriate times. The government will also facilitate setting up of a large number of multi-purpose cooperative societies, primary fisheries societies, and dairy cooperative societies in uncovered panchayat and villages in the next 5 years. Health, education, and skilling.
157 new nursing colleges will be established in co-location with the existing 157 medical colleges established since 2014. A mission to eliminate sickle cell anemia by 2047 will be launched. It will entail awareness creation, universal screening of 7 crore people in the age group of 0 to 40 years in affected tribal areas, and counseling through collaborative efforts of central ministries and state governments. Facilities in select ICMR labs, Indian Council for Medical Research Labs, will be made available for research by public and private medical college faculty and private sector R&D teams for encouraging collaborative research and innovation. A new program to promote research and innovation in pharmaceuticals will be taken up through centers of excellence. We shall also encourage industry to invest in research and development in specific priority areas. Dedicated multidisciplinary courses for medical devices will be supported in existing institutions to ensure availability of skilled manpower for futuristic medical technologies, high-end manufacturing, and research. Teachers' training. Teachers' training will be re-envisioned through innovative pedagogy, curriculum transaction, continuous professional development, dipstick surveys, and ICT implementation. The District Institute of Education and Training will be developed as vibrant institutes of excellence for this purpose. National Digital Library for Children and Adolescents. A National Digital Library for Children and Adolescents will be set up for facilitating availability of quality books across geographies, languages, genres, and levels, and device-agnostic accessibility. States will be encouraged to set up physical libraries for them at panchayat and ward levels and provide infrastructure for accessing the national digital library resources. Additionally, to build a culture of reading and to make up for pandemic time learning loss, the National Book Trust, the Children's Book Trust, and other sources will be encouraged to provide and replenish non-curricular titles in regional languages and in English to these physical libraries. Collaboration with NGOs that work in literacy will also be a part of this initiative to inculcate financial literacy. Financial sector regulators and organizations will be encouraged to provide age-appropriate reading material to these libraries. I move to priority 2, reaching the last mile. Prime Minister Vajpayee's government had formed the Ministry of Tribal Affairs and the Department of Development of Northeast Region to provide a sharper focus to the objective of reaching the last mile. Our government has formed the Ministries of Ayush, Fisheries, Animal Husbandry and Dairying, Skill Development, Jal Shakti, and Cooperation. Building on the success of the Aspirational Districts program, the government has recently launched the
aspirational blocks program covering 500 blocks for saturation of essential government services across multiple domains such as health, nutrition, education, agriculture, water resources, financial inclusion, skill development, and basic infrastructure. Manya Speaker, sir, Pradhan Mantri PBTG, which is Primitive Vulnerable Tribal Groups Development Mission, is being launched. To improve socio-economic conditions of the particularly vulnerable tribal groups, the PBTGs as we refer them to, Pradhan Mantri PBTG Development Mission will be launched. This will saturate PBTG families and habitations with basic facilities such as safe housing, clean drinking water and sanitation, improved access to education, health, nutrition, road and telecom connectivity, and sustainable livelihood opportunities. An amount of 15,000 crores will be made available to implement the mission in the next 3 years under the Development Action Plan for the Scheduled Tribes. Ekalavya Model Residential Schools. In the next 3 years, Center will recruit 38,800 teachers and support staff for the 740 Ekalavya Model Residential Schools, which is serving 3.5 lakh tribal students. In the drought-prone central regions of Karnataka, central assistance of 5,300 crore will be given to Upper Bhadra project to provide sustainable micro irrigation and filling up of surface tanks for drinking water. PM Awas Yojana. The outlay for PM Awas Yojana is being enhanced by 66% to over 79,000 crores. Bharat Shared Repository of Inscriptions will be set up in a digital epigraphy museum with digitization of 1 lakh ancient inscriptions in the first stage. Support for poor prisoners. For poor persons who are in prisons and unable to afford the penalty or the bail amount, required financial support will be provided. Priority number 3, infrastructure and investment. Investments in infrastructure and productive capacity have a large multiplier impact on growth and employment. After the subdued period of the pandemic, private investments are growing again. The budget takes the lead once again to ramp up the virtuous cycle of investment and job creation. Honorable Speaker, sir, the capital investment outlay is being increased steeply for the 3rd year in a row by 33% to 10 lakh crores, which would be would be 3.3% of GDP. This will almost be 3 times the outlay made in 2019-20. This substantial increase in recent years is central to the government's efforts
to enhance growth potential and job creation, crowd in private investments, and provide a cushion against global headwinds. The direct capital investment by the center is complemented by the provision made for creation of capital assets through grants and aids to state. The effective capital expenditure of the center is budgeted at 13.7 lakh crore rupees, which will be 4.5% of GDP. Support to state governments for capital investment. I have decided to continue the 50-year interest-free loan to state governments for 1 more year to spur investment in infrastructure and to incentivize them for complementary policies actions with a significantly enhanced outlay of 1.3 lakh crores. The newly established Infrastructure Finance Secretariat will assist all stakeholders for more private investment in infrastructure, including railways, roads, urban infrastructure, and power, which are predominantly depend on public resources. The harmonized master list of infrastructure will be reviewed by an expert committee for recommending the classification and financing framework suitable for Amrit Kal. A capital outlay, I'm talking about railways now, sir, Honorable Speaker, railways. A capital outlay of 2.40 lakh crores has been provided for the railways. This is the highest ever outlay this highest ever outlay is about 9 times the outlay made in 2013-14. 100 critical transport infrastructure projects for last and first mile connectivity for ports, coal, steel, fertilizer, and food grain sectors have been identified. They will be taken up on priority with investment of 75,000 crores, including 15,000 crore from private sources. 50 additional airports, heliports, water aerodromes, and advanced landing grounds will be revived for improving regional air connectivity. Sustainable cities for tomorrow. States and cities will be encouraged to undertake urban planning reforms and actions to transform our cities into sustainable cities of tomorrow. This means efficient use of land resources, adequate resources for urban infrastructure, transit-oriented development, enhanced availability and affordability of urban land, and opportunities for all. Through property tax governance reforms and ring-fencing user charges on urban infrastructure, cities will be incentivized to improve their creditworthiness for municipal bonds. Like the RIDF, an Urban Infrastructure Development Fund will be established through use of priority sector lending shortfall. This will be managed by the National Housing Bank and will be used by public agencies to create urban infrastructure in Tier 2 and Tier 3 cities. States will be encouraged to leverage resources from the grants of the 15th Finance Commission as well as existing schemes to adopt appropriate user charges while accessing the UIDF. We expect to make available 10,000 crore rupees per annum for this purpose. All cities and towns will be enabled for 100% mechanical desludging of septic tanks and sewers to transition from manhole to machine hole mode.
Enhanced focus will be provided for scientific management of dry and wet waste. Honorable Speaker, sir, our Prime Minister had said, good governance is the key to a nation's progress. Our government is committed to providing a transparent and accountable administration which works for the betterment and welfare of common citizens. Mission Karma Yogi. Under Mission Karma Yogi, center, states and the union territories are making and implementing capacity building plans for civil servants. The government has also launched an integrated online training platform, I Got Karma Yogi, to provide continuous learning opportunities for lakhs of government employees to upgrade their skills and facilitate people-centric approach. Sir, for enhancing ease of doing business, more than 39,000 compliances have been reduced and more than 3,400 legal provisions have been decriminalized. For furthering the trust-based governance, we have introduced the Jan Vishwas Bill to amend 42 central acts. This budget proposes a series of measures to unleash the potential of our economy. Centers of Excellence for Artificial Intelligence. For realizing the vision of Make AI in India and Make AI Work for India, 3 centers of excellence for artificial intelligence will be set up in top educational institutions. Leading industry players will partner in conducting interdisciplinary research, develop cutting-edge applications, and scalable problem solutions in the areas of agriculture, health, and sustainable cities. This will galvanize an effective AI ecosystem and nurture quality human resources in the field. National Data Governance Policy. To unleash innovation and research by startups and academia, a national data governance policy will be brought out. This will enable access to anonymized data. The KYC process will be simplified, adopting a risk-based instead of one-size-fits-all approach. The financial sector regulators will also be encouraged to have a KYC system fully amenable to meet the needs of digital India. One-stop solution for identity and address updating. A one-stop solution for reconciliation and updating of identity and address of individuals maintained by various government agencies, regulators, and regulated entities will be established using DigiLocker service and Aadhaar as foundational identity. Speaker, sir, common business identifier. For the business establishments required to have a permanent account number, the PAN will be used as the common identifier for all digital systems of specified government agencies. This will bring ease of doing business, and it will be facilitated through a legal mandate. For obviating the need for separate submission of same information to different government agencies, a system of unified filing process will be set up. Such filing of information or return in simplified forms on a common portal will be shared with other agencies as per the filer's choice. Vivad Se Vishwas 1, relief for MSMEs. In cases of failure by MSMEs,
To execute contracts during the COVID period, 95% of the forfeited amount relating to the bid or performance security will be returned to them by government and government undertakings. This will provide relief to the MSMEs. Vivad Se Vishwas 2, settling contractual disputes. To settle contractual disputes of government and government undertakings, wherein arbitral award is under challenge in a court, a voluntary settlement scheme with standardized terms will be introduced. This will be done by offering graded settlement terms depending on pendency level of the dispute. The state support mission of Niti Aayog will be continued for 3 years for our collective efforts towards national priorities. Result-based financing. To better allocate scarce resources for competing development needs, the financing of select schemes will be changed on a pilot basis from input-based to result-based. E-courts. For efficient administration of justice, phase 3 of e-courts projects phase 3 of the e-courts project will be launched with an outlay of 7,000 crores. Fintech services in India have been facilitated by our digital public infrastructure, including Aadhaar, PM Jan Dhan Yojana, Video, KYC, India Stack, and UPI. To enable more fintech innovative services, the scope of documents available in DigiLocker for individuals will be expanded. An entity DigiLocker will be set up for the use by MSMEs, large businesses, and also charitable trusts. This will be towards storing and sharing documents online securely whenever needed with various authorities, regulators, banks, and other business entities. 5G services. 100 labs for developing applications using 5G services will be set up in engineering institutions to realize a new range of opportunities, business models, and employment potential. The labs will cover, among others, applications such as smart classrooms, precision farming, intelligent transport systems, and healthcare applications. Lab-grown diamonds. Lab-grown diamonds is a technology and innovation-driven emerging sector with high employment potential. These environment-friendly diamonds, which have optically and chemically the same properties as natural diamonds. To encourage indigenous production of LGD, lab-grown diamond seeds and machines, and to reduce import dependency, a research and development grant will be provided to one of the IITs for 5 years. To reduce the cost of production, a proposal to review the custom duty on LGD seeds will be indicated in Part B of the speech. I come to the fifth priority, Honorable Speaker, sir, green growth. Honorable Prime Minister has given a vision for life or lifestyle for environment to spur a movement of environmentally conscious lifestyle. India is moving forward firmly for the Panchamrit, the net zero carbon emission by 2070 to usher in green industrial and economic transition. This budget builds on our focus on green growth. The recently launched National Green Hydrogen Mission
with an outlay of 19,700 crores, will facilitate transition of the economy to low carbon intensity, reduce dependence on fossil fuel imports, and make the country assume technology and market leadership in this sunrise sector. Our target is to reach an annual production of 5 MMT by 2030. Energy transition. This budget provides for 35,000 crores for priority capital investment towards energy transition and net zero objectives and energy security by Ministry of Petroleum and Natural Gas. To steer the economy on sustainable development path, battery energy storage systems with capacity of 4,000 MWh will be supported with viability gap funding. A detailed framework for pumped storage projects will also be formulated. Renewable energy evacuation. The interstate transmission system for evacuation and grid integration of 13 gigawatt renewable energy from Ladakh will be constructed with investment of 20,700 crore, including central support of 8,300 crores. Green credit program. For encouraging behavioral change, a green credit program will be notified under the Environment Protection Act. This will incentivize environmentally sustainable and responsive actions by companies, individuals, and local bodies, and help mobilize additional resources for such activities. PM Program for Restoration, Awareness, Nourishment, and Amelioration of Mother Earth, PM Pranam, will be launched to incentivize states and union territories to promote alternative fertilizers and balanced use of chemical fertilizers. GoBardhan scheme. 500 new waste to wealth plants under GoBardhan, galvanizing organic bio-agro resources done. GoBardhan scheme will be established for promoting circular economy. These will include 200 compressed biogas plants, including 75 plants in urban areas, and 300 community or cluster-based plants at a total investment of 10,000 crores. I will refer to this in Part B also. In due course, a 5% CBG mandate will be introduced for all organizations marketing natural and biogas. For collection of biomass and distribution of biomanure, appropriate fiscal support will also be provided. Bharatiya Prakritik Kheti Bio Input Resource Centers. Over the next 3 years, we will facilitate 1 crore farmers to adopt natural farming. For this, Honorable Speaker, 10,000 bio input resource centers will be set up, creating a national level distributed micro fertilizer and pesticide manufacturing network. MISHTI. Building on India's success in afforestation, mangrove initiative for shoreline habitats and tangible incomes, MISHTI, will be taken up for mangrove plantation along the coastline and on salt pan lands wherever feasible through convergence between Manrega, Campa, Fund and other sources. Amrit Dharohar. Wetlands are vital ecosystems
which sustain biological diversity. In his latest Mann Ki Baat, the Prime Minister said, now, I quote, now the total number of Ramsar sites in our country has increased to 75, whereas before 2014, there were only 26, unquote. Local communities have always been at the forefront of conservation efforts. The government will promote their unique conservation values through Amrit Dharohar, a scheme that will be implemented over the next 3 years to encourage optimal use of wetlands and enhance biodiversity, carbon stock, ecotourism opportunities, and income generation for local communities. Coastal shipping. Coastal shipping will be promoted as the energy efficient and lower cost mode of transport, both for passengers and freight, through PPP mode with viability gap funding. Vehicle replacement. Vehicle replacement is an important continuing policy, replacing the old political, replacing, absolutely, thank you. Replacing old polluting vehicles. Maybe applicable, right? Replacing old polluting vehicles is an important part of greening our economy. In furtherance of the vehicle scrapping policy mentioned in Budget 21-22, I have allocated adequate funds to scrap old vehicles of the central government. States will also be supported in replacing old vehicles and old state ambulances. Honorable Speaker, sir, I move to priority 6, youth power. To empower our youth and help the Amrit PD realize their dreams, we have formulated the National Education Policy, which is very wide in its scope, but one of the things is also to focus on skilling, adopted economic policies that facilitate job creation at scale and have supported business opportunities. Pradhan Mantri Kaushal Vikas Yojana. Pradhan Mantri Kaushal Vikas Yojana 4.0 will be launched to skill lakhs of youth within the next 3 years. On-job training, industry partnership, and alignment of courses with needs of industry will be emphasized. The scheme will also cover new age courses for Industry 4.0 like coding, AI, robotics, mechatronics, IoT, 3D printing, drones, and other soft skills. To skill youth for international opportunities, 30 Skill India International Centers will be set up across different states. The digital ecosystem for skilling will be further expanded with the launch of a unified Skill India digital platform for enabling demand-based formal skilling, linking with employers including MSMEs, and facilitating access to entrepreneurship schemes. To provide stipend support to 47 lakh youths in 3 years, direct benefit transfer under a pan-India national apprenticeship promotion scheme will be rolled out. Tourism. Honorable Speaker, sir, with an integrated and innovative approach, at least 50 destinations will be selected through challenge mode. In addition to aspects such as physical connectivity, virtual connectivity, tourist guides, high standards for food streets, and tourist security, all the relevant aspects would be made available on an app to enhance tourist experience. Every destination would be developed as a complete package.
the focus of development of tourism would be on domestic as well as foreign tourists. Sector-specific skilling and entrepreneurship development will be dovetailed to achieve the objectives of Dekho Apna Desh initiative. This was launched as an appeal by the Honorable Prime Minister to the middle class to prefer domestic tourism over international tourism. The integrated development of theme-based tourist circuits, the Swadesh Darshan scheme, was also launched. Under the Vibrant Villages program, tourism infrastructure and amenities will be facilitated in border villages. Unity Mall. States will be encouraged to set up a Unity Mall in their state capital or most prominent tourism center or the financial capital for promotion and sale of their one district, one product and GI products and other handicraft products, and for providing space for such products of all other states as well. Sir, priority number 7, financial sector. Our reforms in the financial sector and innovative use of technology have led to financial inclusion at scale, better and faster service delivery, ease of access to credit, and participation in financial markets. This budget proposes to further these measures. Credit guarantee for MSMEs. Last year, I proposed revamping of the credit guarantee scheme for the MSMEs. I am happy to announce that the revamped scheme will take effect from 1st April 2023 through infusion of 9,000 crores in the corpus. This will enable additional collateral-free guaranteed credit of 2 lakh crores of rupees. Further, the cost of credit will be reduced by about 1%. A National Financial Information Registry will be set up to serve as the central repository of financial and ancillary information. This will facilitate efficient flow of credit, promote financial inclusion, and foster financial stability. A new legislative framework will govern this credit public infrastructure and will be designed in consultation with the RBI. To meet the needs of Amrit Kal and to facilitate optimum regulation in the financial sector, public consultation, as necessary and feasible, will be brought to the process of regulation making and issuing subsidiary directions. To simplify, to ease, and to reduce cost of compliance, financial sector regulators will be requested to carry out a comprehensive review of existing regulations. For this, they will consider suggestions from public and regulated entities. Time limits to decide the application under various regulations will also be laid down. Honorable Speaker, sir, to enhance business activities in GIFT IFSC, the following measures will be taken. Delegating powers under the SEZ Act to the IFSCA to avoid dual regulation. Setting up a single window IT system for registration and approval of IFSCA, SEZ authorities, GSTN, RBI, SEBI, and IRDAI. Permitting acquisition financing by IFSC banking units of foreign banks. Establishing a subsidiary of Exim Bank for trade refinancing. Amending IFSCA Act for statutory provisions for arbitration, ancillary services, and avoiding dual regulation under the SEZ Act, and recognizing offshore derivative instruments as valid contracts. Honorable Speaker, sir, data embassy
For countries looking for digital continuity solutions, we will facilitate setting up of their data embassies in GIFT IFSC. Improving governance and investor protection in banking sector. To improve bank governance and enhance investors' protection, certain amendments to the Banking Regulation Act, the Banking Companies Act, and the Reserve Bank of India Act are being proposed. Capacity building in securities market. Honorable Speaker, sir, to build capacity of functionaries and professionals in the securities market, SEBI will be empowered to develop, regulate, maintain, and enforce norms and standards for education in the National Institute of Securities Markets and to recognize award of degrees, diplomas, and certificates. A central processing center will be set up for faster response to companies through centralized handling of various forms filed with field officers under the Companies Act. Reclaiming of shares and dividends. For investors to reclaim unclaimed shares and unpaid dividends from the Investor Education and Protection Fund Authority with ease, from the Investor Education and Protection Fund Authority with ease, an integrated IT portal will be established. Digital payments continue to find wide acceptance. In 2022, they show an increase of 76% in transaction and 91% in value. Fiscal support for this digital public infrastructure will continue in 2023-2024. आज़ादी का अमृत महोत्सव, महिला सम्मान बचत पत्र. For commemorating Azadi Ka Amrit Mahotsav, a one-time new small savings scheme, Mahila Samman Savings Patra or Savings Certificate, Mahila Samman Savings Certificate will be made available for a 2-year period up to March 2025. This will offer deposit facility up to 2 lakh in the name of a woman or girls for a tenure of 2 years at fixed interest rate of 7.5% with partial withdrawal option. Senior citizens. The maximum deposit limit for senior citizens savings scheme will be enhanced from 15 lakh to 30 lakhs of rupees. The maximum deposit limit for monthly income account scheme will be enhanced from 4.5 lakh to 9 lakh for single account and from 9 lakh to 15 lakh for joint account. Honorable Speaker, sir, fiscal management. 50 years interest-free loan to states. The entire 50-year loan to states has to be spent on capital expenditure within 2023-24. Most of this will be at the discretion of the states, but a part will be conditional on states increasing their actual capital expenditure. Parts of the outlay will also be linked to or allocated for the following purposes: scrapping old government vehicles, urban planning reforms and actions, financing reforms in urban local bodies to make them creditworthy for municipal bonds, housing for police personnel above or as part of the police station, constructing unity malls, children and adolescent libraries and digital infrastructure, and state share of capital expenditure of central schemes. Honorable Speaker, sir,
Fiscal deficit of states. States will be allowed a fiscal deficit of 3.5% of GSDP, of which 0.5% will be tied to power sector reforms. Revised estimates 2022 to 2023. The revised estimate, Honorable Speaker, sir, of the total receipts other than borrowing is 24.3 lakh crores, of which the net tax receipts are 20.9 lakh crores. The revised estimate of the total expenditure is 41.9 lakh crores of rupees, of which the capital expenditure is about 7.3 lakh crores. The revised estimate of the fiscal deficit is 6.4% of GDP, adhering to the budget estimate. So budget estimates of 2023-24. Coming to 2023-24, the total receipts other than borrowings and the total expenditure are estimated at 27.2 lakh crores and 45 lakh crores respectively. The net tax receipts are estimated at 23.3 lakh crores. The fiscal deficit is estimated to be 5.9% of the GDP. In my budget speech for 21-22, I had announced that we plan to continue the path of fiscal consolidation, reaching a fiscal deficit of below 4.5% by 2025-26, with a fairly steady decline over the period. We have adhered to this path, and I reiterate my intention to bring the fiscal deficit below 4.5% of GDP by 2025-26. To finance the fiscal deficit in 2023-24, the net market borrowings from dated securities are estimated at 11.8 lakh crores. The balance financing is expected to come from small savings and other sources. The gross market borrowings are estimated at 15.43 lakh crores of rupees. Honorable Speaker, sir, I now move to Part B. Indirect taxes. My indirect tax proposals will aim to promote exports, boost domestic manufacturing, enhance domestic value addition, encourage green energy and mobility. A simplified tax structure with fewer tax rates helps in reducing compliance burden and improving tax administration. I propose to reduce the number of basic customs duty rates on goods other than textiles and agriculture from 21 to 13. As a result, there are minor changes in the basic custom duties, cesses and surcharges on some items including toys, bicycle, automobiles and naphtha. Green mobility. To avoid cascading of taxes on blended compressed natural gas, I propose to exempt excise duty on GST paid compressed biogas contained in it. To further provide impetus to green mobility, customs duty exemptions is being extended to import of capital goods and machinery required for manufacture of lithium-ion cells for batteries used in electrical vehicles as well. Electronics. As a result of various initiatives of the government, including phased manufacturing program, mobile phone production in India has increased from 5.8 crore units valued at about 18,900 crore in 2014-15 to 31 crore units valued at 2,75,000 crore in the last financial year. To further deepen domestic value addition in manufacturing of mobile phones, I propose to provide relief to customs duty. I propose to provide relief in customs duty on import of certain parts and inputs like camera lens, and continue the concessional duty on lithium-ion cells for batteries
for another year. Similarly, to promote value addition in manufacture of televisions, I propose to reduce the basic customs duty on parts of open cells of TV panels to 2.5%. Electrical, to rectify inversion of duty structure and encourage manufacturing of electric kitchen chimneys, the basic custom duty on electric kitchen chimney is being increased from 7.5% to 15%, and that on heat coils for these is proposed to be reduced from 20% to 15%. Chemicals and petrochemicals. Denatured ethyl alcohol is used in chemical industry. I propose to exempt basic customs duty on it. This will also support the ethanol blending program and facilitate an endeavor for energy transition. Basic customs duty is also being reduced on acid-grade fluorospar from 5% to 2.5% to make the domestic fluorochemicals industry competitive. Further, the basic customs duty on crude glycerin for use in manufacture of epichlorohydrin is proposed to be reduced from 7.5% to 2.5%. Marine products. In the last financial year, marine products recorded the highest export growth, benefiting farmers in the coastal states of the country. To further enhance the export competitiveness of marine products, particularly shrimps, duty is being reduced on key inputs for domestic manufacture of shrimp feed. India is a global leader, as I said in Part A, in cutting and polishing of natural diamonds, contributing about 3/4 of the global turnover by value. With the depletion of deposits of natural diamonds, the industry is moving towards lab-grown diamonds, and it holds huge promise. To seize this opportunity, I propose to reduce the basic customs duty on seeds used in their manufacture. Customs duties on door or doré and bars of gold and platinum were increased earlier this fiscal. I propose to increase the duties on articles made therefrom to enhance the duty differential. I also propose to increase the import duty on silver doors, bars and articles to align them with that on gold and platinum. To facilitate availability of raw materials for the steel sector, exemptions from basic custom duty on raw materials for manufacture of CRGO steel, ferrous scrap and nickel cathode is being continued. Similarly, the concessional BCD of 2.5% on copper scrap is also being continued to ensure the availability of raw materials for secondary copper producers who are mainly in the MSME sectors. Compounded rubber. The basic custom duty rate on compounded rubber is being increased from 10% to 25% or 30 kg, whichever is lower, at par with that of natural rubber other than latex, to curb circumvention of duty. Cigarettes. National calamity contingent duty on specified cigarettes was last revised 3 years ago. This is proposed to be revised upwards by about 16%. Direct taxes. I now come to my direct tax proposals. Honorable Speaker, these proposals aim to maintain continuity and stability of taxation, further simplify and rationalize various provisions to reduce the compliance burden, promote the entrepreneurial spirit, and provide tax relief to citizens. It has been constant endeavor of the Income Tax Department to improve taxpayers' services by making compliance easy and smooth. Our taxpayers portal received a maximum of 72 lakh returns in a day, processed more than 6.5 crore returns this year. Average processing period reduced from 93 days in financial year 13-14 to 16 days only now. And
45% of the returns were processed within 24 hours. We intend to further improve this, roll out the next generation common IT return form for taxpayer convenience, and also plan to strengthen the grievance redressal mechanism. MSMEs and professionals. MSMEs are growth engines of our economy. Micro enterprises with turnover up to 2 crore of rupees and certain professionals with turnover of up to 50 lakh rupees can avail the benefit of presumptive taxation. I propose to provide enhanced limits of 3 crore and 75 lakh respectively to the taxpayers whose cash receipts are no more than 5%. Whose cash receipts are no more than 5%. Moreover, to support MSMEs in timely receipt of payments, I propose to allow deduction for expenditure incurred on payments made to them only when payment is actually made. Cooperation. Cooperation is a value to be cherished. In realizing our Prime Minister's goal for Sahkar Se Samriddhi and his resolve to connect the spirit of cooperation with the spirit of Amrit Kal, in addition to the measures proposed in Part A, I have a slew of proposals for the cooperation sector. First, new cooperatives that commence manufacturing activities till 2024, 31st March, shall get the benefit of a lower tax rate of 15%, as is presently available to new manufacturing companies. Secondly, I propose to provide an opportunity to sugar cooperatives to claim payments made to sugarcane farmers for the period prior to the assessment year 2016-17 as expenditure. This is expected to provide them a relief of almost 10,000 crores. Thirdly, I am providing a higher limit of 2 lakh per member for cash deposits to loans in cash by primary agricultural cooperative societies and primary cooperative agriculture and rural development banks. I repeat that. Thirdly, I am providing a higher limit of 2 lakh per member for cash deposits to and loans in cash by primary agricultural cooperative societies and primary cooperative agricultural and rural development banks. Similarly, a higher limit of 3 crore for TDS on cash withdrawal is being provided to cooperative societies. Startups. Entrepreneurship is vital for a country's economic development. We have taken a number of measures for startups and they have borne results. India is now the third largest ecosystem for startups globally and ranks second in innovation quality among middle-income countries. I propose to extend the date of incorporation for income tax benefits to startups from 31/3/2023 to 31/3/2024. I further propose to provide the benefit of carry forward of losses on change of shareholding of startups from 7 years of incorporation to 10 years. To reduce the pendency of appeals at commissioner level, I propose to deploy about 100 joint commissioners for disposal of small appeals. We shall also be more selective in taking up cases for scrutiny of returns already received this year. Better targeting of tax concessions. For better targeting of tax concessions and exemptions, I propose to cap deduction from capital gains on investment in residential house under Section 54 and Section 54F to 10 crores. Another proposal with similar intent is to limit income tax exemption from proceeds of insurance policies with very high value.
Rationalization. Honorable Speaker, sir, there are a number of proposals relating to rationalization and simplification. Income of authorities, boards, and commissions set up by statutes of union or state for the purpose of housing, development of cities, towns, and villages, and regulating and developing an activity or matter is proposed to be exempted from income tax. Other major measures in this direction are removing the minimum threshold of 10,000 for TDS and clarifying taxability relating to online gaming, not treating conversion of gold into electronic gold receipts and vice versa as capital gains, reducing the TDS rate from 30% to 20% on taxable portion of EPF withdrawals in non-PAN cases, and taxation on income for market-linked debentures. Other major proposals in the finance bill relate to the following: extension of period of tax benefits to funds relocating to IFSC, GIFT City till 31/3/2025, decriminalization under Section 276A of the Income Tax Act, allowing carry forward of losses on strategic disinvestment, including that of IDBI Bank, and providing EEE status to Agniveer Fund. Personal income tax. Now I come to what everyone is waiting for. Personal income tax. I have 5 major announcements to make in this regard. These primarily benefit our hard-working middle class. The first one concerns rebate. Currently, those with income up to 5 lakh do not pay any income tax in both old and new regimes. I propose to increase the rebate limit to 7 lakhs in the I propose to increase the rebate limit to 7 lakh in the new tax regime. Thus, persons in the new tax regime with income up to 7 lakhs will not have to pay any tax at all. The second proposal relates to middle-class individuals. I had introduced in the year 2020 the new personal income tax regime with 6 income slabs starting from 2.5 lakh. I propose to change the tax structure in this regime by reducing the number of slabs to 5 and increasing the tax exemption limit to 3 lakhs. The new tax rates are 0 to 3 lakh, nil. 3 to 6 lakhs, 5%. 6 to 9 lakhs, 10%. 9 to 12 lakh, 15%. 12 to 15 lakhs, 20%. And above 15 lakhs, 30%. This will provide major relief to all taxpayers in the new regime. An individual with an annual income of 9 lakhs will be required to pay only 45,000 rupees. This is only 5% of his or her income. It is a reduction of 25% on what he or she is required to pay now. That is 60,000. So in the place of 60,000, it is now only 45,000. Similarly, an individual with an income of 15 lakh rupees would be required to pay only 1.5 lakh or 10% of his income or her income, a reduction of 20% from the existing liability
of 1,87,500 rupees. My third proposal is for the salaried class and the pensioners, including family pensioners, for whom I propose to extend the benefit of standard deduction to the new tax regime. Each salaried person with an income of 15.5 lakh rupees or more will thus stand to benefit by 52,500 rupees. My fourth announcement in personal income tax is regarding the highest tax rate, which in our country is 42.74%. This is among the highest in the world. I propose to reduce the highest surcharge. Rate from 37% to 25% in the new tax regime. This would result in reduction of the maximum rate. This would result in the reduction of the maximum tax rate to 39%. Lastly, the limit of 3 lakh rupees for tax exemption on leave encashment on retirement of non-government salaried employees was last fixed in the year 2002, when the highest basic pay in the government was only 30,000 rupees per month. In line with the increase in the government salaries, I am proposing to increase this limit to 25 lakh rupees. We are also making the new income tax regime as the default tax regime. However, citizens will continue to have the option to avail the benefit of the old tax regime. Apart from these, I am also making some other changes as given in the annexure. As a result of these proposals, revenue of about 38,000 crore to 37,000 crore in direct taxes and rupees 1,000 crore in indirect taxes will be foregone, while revenue of about 3,000 crore will be additionally mobilized. Thus, the total revenue foregone is about 35,000 crores annually. Honorable Speaker, sir, with these words, I commend the budget to this August House. One hour, 25 minutes. आइटम नंबर 1 माननीय आइटम नंबर 2 श्रीमती निर्मला सीतारमण जी. Sir, with your permission, I lay on the table of the following statements. Under Section 3(1) of the Fiscal Responsibility Budget Management Act 2003, 1. Medium-term fiscal policy cum fiscal policy strategy statement and macroeconomic framework statement. माननीय सदस्यगण, जैसा कि आपको समाचार भाग 2 के माध्यम से पहले ही सूचित किया जा चुका है कि माननीय वित्त मंत्री जी के बजट भाषण की प्रतियां हार्ड कॉपी के रूप में उपलब्ध कराई गई है. आप बजट भाषण की अपनी अपनी प्रति प्रकाशन पलक से ले लें. आपको ये भी सूचित किया जाता है कि माननीय मंत्री द्वारा बजट प्रस्तुत किए जाने के पश्चात उसकी प्रतियां आपको मेंबर्स पोर्टल के माध्यम से उपलब्ध करा दी जाएगी. आइटम नंबर 3 माननीय मंत्री जी, वित्त मंत्री जी. Sir, with your permission, I rise to move for leave to introduce the Finance Bill 2023. प्रश्न ये है कि विधेयक को पुनर्स्थापित करने की अनुमति प्रदान की जाए. जो सदस्य इसके पक्ष में हाँ कहें, जो सदस्य विरोध में ना कहें. मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में, हाँ वालों के पक्ष में. माननीय मंत्री जी विधेयक को पुनर्स्थापित करें. Sir, I introduce the bill. सभा की कार्रवाई कल गुरुवार दिनांक 2 फरवरी
2023 को प्राप्त 11 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है। What is Consolidated Fund? The Consolidated Fund is made up of all revenues and loans raised by the government. It also includes receipts from recoveries of loans granted by it. All government expenses are paid out of Consolidated Fund. No amount can be withdrawn without Parliament's approval. संसद की प्रक्रिया। हमारी संसद की इस कड़ी में आज चर्चा उन प्रक्रियाओं की जिन्हें आप बार बार सुनते हैं। आज बड़ी ही आसान भाषा में हम आपको इस बारे में बताने जा रहे हैं। सबसे पहले स्थगन, एडजर्नमेंट। स्थगन एक निश्चित समय के सदन की कार्यवाही को निलंबित कर देता है, जो घंटे, दिन या सप्ताह का हो सकता है, लेकिन वो तय होता है। सदन की कार्यवाही को स्थगित करने की शक्ति सदन के पीठासीन अधिकारी के पास होती है। सदन की कार्यवाही आज दिनांक 12 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है। अनिश्चितकाल Namaskar viewers, hello and welcome to this special coverage on Sansad TV of the Union Budget 2023-24 presented by Finance Minister Nirmala Sitharaman just a short while ago in Parliament. The first budget of the Amrit Kal, Finance Minister Nirmala Sitharaman's fifth consecutive budget and also the last full budget of the Modi 2.0 government before the 2024 general elections. The key points very quickly. The Finance Minister said the Indian economy is on the right track, heading towards a bright future. The government's focus on reforms has helped the Indian economy stay resilient despite the global headwinds. Now, as a bright spot in the global gloom, India is poised for higher growth in the years to come. So, for this bright future, the Finance Minister laid the roadmap for future growth and she outlined 7 priorities for the first budget in the Amrit Kal: inclusive development, reaching the last mile, infra and investment, also unleashing the huge potential of India,
green growth, youth power, and certain reforms in the financial sector as well, Harsh. So we'll discuss all of these priority areas that Finance Minister Nirmala Sitharaman has announced, and also some tax reliefs that she just announced in the second part of her speech. So with an eminent panel of experts today, we will decode all of these post-budget analysis, the announcements that the Finance Minister has made, Harsh. जी बिल्कुल टीना, आपने बिल्कुल सही कहा कि ये जो 7 प्रायोरिटीज़ निर्मला सीतारमन ने आज अपने बजट प्रपोजल्स में रखे हैं, ये 7 प्रायोरिटीज़ बिल्कुल उस सप्तऋषि की तरह काम करेंगे। जैसे आकाश में हम देखते हैं कि सप्तऋषि है और वहाँ से आशीर्वाद दे रहे हैं, और वो ये सारी चीज़ें का जो विकास होगा वो बहुत ही बेहतरीन तरीके से होगा। इस पर हम चर्चा करेंगे कि ये 7 प्रायोरिटीज़ क्या क्या हैं जिनका जिक्र आपने किया। लेकिन अभी हमारे साथ स्टूडियो में उपलब्ध हैं AKB, जिन्हें हम कहते हैं, AK भट्टाचार्य साहब, बहुत बहुत स्वागत आपका। आप एडिटोरियल डायरेक्टर हैं बिजनेस स्टैंडर्ड अखबार में, और आम आदमी को कहें कि जिस चीज़ का बड़ी ही बेसब्री से किसी भी बजट में इंतज़ार रहता है, ख़ासकर हम कहते हैं वेतन भोगियों के लिए, कान लगाकर सुनते रहते हैं। और वित्त मंत्री के पार्ट B में, जिसमें हम डायरेक्ट टैक्सेस इनडायरेक्ट टैक्सेस की चर्चा करते हैं, उसमें उन्होंने ये तोहफा दे ही दिया है कि 7 लाख तक की अगर आपकी आय है तो आपको कोई टैक्स नहीं देना